A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like Venture Catalysts, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. Welcome to GCS presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1 Grand Finale. I shall request both the skippers to join us, please. Prithvi Kothari, representing Sapient Leopards, and of course Samir Panchaksha, representing all seasons Panthers. Well, we have who's who for the toss ceremony today, starting with, of course, Bhai Dalal. In this show, the man who took GCH cricket to new heights. We welcome you, sir. Ama Sahib, the popular face. Then we have got Jayesh Bhai Kapadia, BV Acharya, Mr. Ganesh Iyer. Vanakkam sir, Wispy Kapadia, who has coached internationally to so many players. And then we have got Ritesh Sukheja from Marco Polo team. We have got Bisht sir. And then of course Bakul Bhai Mistri. And then we have got Ripple Parikh and Nimish Vora. I guess I got all right. So we also have Umpire Rajan Kasbe and Surya Joshi. As I request, we also welcome Mr. Gokul Bista, the man who has been doing excellent job as a match referee. Welcome to both the captains, a young captain on one hand and an experienced captain on the other hand. So it's going to be flair versus method. It is going to be youth versus experience, but it is all happening here at GCH. So we are going to have a toss ceremony. Mr. Nitin Dalal will flip the toss coin. Tails is the call. Heads it is. Heads it is. So Samir, first of all, playing grand finale is always special. Did you ever thought when you got this team in the auction that I'm going to play the grand finale? I think I never thought of playing final, but yeah, we wanted to put a good show for every match which we play, and we normally take each match at a time. Of course, the goal is to win the cup. Finally, we are one step behind, and let's hope we do it this year. And decision? We'll field first. Thank you so much. Prithvi, if you could join me, please. So, Captain Prithvi Kothari, if you could join us for a short talk. Prithvi, of course, a young captain, yesterday 94 runs. Are we expecting 100 today from Prithvi? I'll try my best, whatever in the store. Let's see. Josefa missed out yesterday on runs. Your expectations from him, because he's an integral part and Wismay Choksi comes in. No, I'm confident. Huzi has always been a great player for us throughout the tournament. Yes, he did miss last time, but he's very excited for today's game and he's hoping to come better today on the ground. Well, thank you so much. Now I shall request Mr. Ganesh Iyer to join me, please. So, wait. I'll also join them. Yeah. Welcome, Mr. Ganesh Iyer. It's 1 month long tournament and you are with us since day one. What are your thoughts on the way tournament is being played and the way you have seen cricket growing in GCH, sir? Well, everything has to have a vision for the future. And I think Nitin Bhai led the vision to
to make a strong team for Garware, of its members, by its members, in the next 3 years. And this is the first step in that direction. And I think we have seen some good and extra talent that's developing. And I'm sure in the next 2 editions, we'll have a team of only Garware members playing the big tournaments. Well, thank you so much, sir, for your kind words. Well, guys, we have got Nitin Bhai with us, the man whose brainchild has come into reality. Everyone is talking at the club about this Billmart GCH Cricket Super League. Nitin Bhai, what are the emotions running through your mind today? Fantastic moment for me, and it has been going on very well. And the tournament has ended in a good note. Basically, all players have played very well. And I think today Sapient and all seasons are playing finals, and all the best to them. And all the other teams also fought out very well. Unfortunately, Balasinore and yesterday Triumph Knights, they were also the good contenders who played semi-finals. But ultimately one has to win and one has to lose. So these 2 teams are playing today, and all the best to them. Thank you very much. So thank you so much for your kind words. Can we have Mr. B.V. Acharya with us, please? Acharya Sahib, good morning and welcome to you, sir. You have been also enjoying this tournament. How is this tournament gone for you as a spectator, as an avid cricket lover, and of course, as a part of GCH? I can say, from the administrative point of view, being a secretary of the Garware club, it was a huge task. First of all, to get this ground, it was something we have to run from pillar to post to get this ground, that is. And subsequently, to fulfill all the compliances, that was a huge task. I wish all the 2 teams for today's final. Thank you. Well, thank you so much, Mr. B.V. Acharya, the man who has worked really hard. So guys, the news from the middle is all seasons Panthers have won the toss and they have invited Sapient Leopards to bat first. The match goes live in a short while from now. Don't go anywhere. Stay tuned to YouTube channel of GCH. We'll be back right away. Thank you. Thank you very much. All the best, boys. Thank you. All the best. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like Venture Catalysts, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like?
And infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like Venture Catalysts, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? And infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors.
A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like venture capitalists, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. Morning everyone and welcome to Mahalakshmi Cricket Ground here at Western Railway Sports Association. Both the umpires, Rajan Kasbe on your left and Surya Joshi on your right, with the leather ball and winners and runners up trophy in the background. So this is the winners and runners up trophy that will be awarded today. You are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League last match, the Summit Clash, and I welcome all the spectators here at the MCG, and we also welcome our YouTube viewers. Today is a Sunday morning, and in case you have gotten up, you are catching up with World Cup football, also catching up with England, Pakistan and Australia West Indies series. I welcome all of you, and I hope you are freshen up, ready with your cup of tea or coffee, along with some snacks, some munching. Don't go anywhere, stay glued, arrange your popcorns, biscuits, cookies, tea, coffee, juices, fruit bowls, because today you are going to witness one of the keen contest to be played between Sapient Leopards and all seasons Panthers. So we welcome our match referee, Mr. Gokul Bishta. We also welcome officials Surya Joshi and Rajan Kasbe, along with our scoring team Arushi Tamse and Prajakta Desai. So that's the wicketkeeper Karan Raj Zaveri, jersey number 14. Bhavik, who had a brilliant innings yesterday, and of course Abhishek Shah, who was man of the match yesterday. So a serious team meeting, and so that's the ground view. Sanju Srivastav, Bhavik, Karan Raj Zaveri, and then you have got Samir Pankaj Shah, Ripple Parik, Harshal Shah, Ankit. You can't forget these names, isn't it? Look at the solidarity. Wow, that was a moment. So we are going to start the match in a short while from now, as
We are awaiting both the batters to come in. This tournament started on 5th of November and today is 4th of December. Exactly a month of very good cricket as both the openers getting ready. Traditionally, Prithvi Kothari and Piyush Meghani have been opening. Let's see what's the batting order today. And we welcome Srinitin Bhai Dalal, whose brainchild has yielded fantastic results. Welcome to all the board of directors. Welcome to all the office bearers. Welcome to Cricket Advisory Committee members, family members, invited guests and dignitaries. For one last time, GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1. Thanks to Billmart. We are thankful to our Shri Amol Kaleji, President of the Apex Council of Mumbai Cricket Association, and Gautam Bhai Shah for being the title sponsors. We are thankful to apparel partners JK and Company, Cricket Ball sponsored by Eagle Infra Industries Limited, Caps by Neo Designs, Fours by Elite Digital, Sixes by Samir Pete, Man of the Match by Stainless Designer Studio, Cricket Pad Sleeves by Beetle Lift Company, the online pawn store. Thanks to Venture Catalyst Group for being sponsor for the Sapient Leopards, India's first integrated incubator, and Regal Steel Center for Broadcasting partner. Sapient Leopards are owned by Rachit Bakshi, sponsored by Venture Catalyst and SBI Mutual Fund. On the other end, All Seasons Panthers are owned by Kiran Shetty and sponsored by 99 Pancakes. So Prithvi Kothari, 94 not out yesterday. A very big achievement. And along with him is Piyush Meghani, the useful opener. I'm sure both these batters had a good sleep last night. Excellent camera work by the technical team throughout the tournament. Match referee Gokul Bista getting ready to observe things, and so are all of us. This is day 10 and Ripple Parekh will be opening the bowling for All Seasons Panthers. This is one tournament that you would want to catch up. Event of the year for Garware Clubhouse, established in 1974 for members only club, and has made a big name for itself as Prithvi Kothari takes the guard from the umpire. It's a beautiful fluorescent green outfield, very well upkeep and maintenance by Western Railway Sports Association, which has been a hub for so many sporting activities, as there are few soccer tournaments going on in the background. And first over to be commenced from the pavilion end. First ball hitting through the line, skipper to skipper. Prithvi Kothari's cover drive stopped by Samir Pankaj Shah in the ring. There's a slip in place, Wadish Gully. There's a point. And this time punched beautifully off the back foot, but finds a fielder there in Bhavik Shah. And Prithvi, I think, having some cramp. He's limping on the very first run. Hope things are fine with him, because he is the man who is the leader of Sapient Leopards. 2 runs to start with. I think he has got new pair of shoes. Short and wide and punished past the point fence for Elite Digital 4. Prithvi starts from the word go. Bowls from the edge of the crease. A regulation leg cutter.
And that ball flew away for Allied Digital 4. IT managed responsibly. That's the tagline of Allied Digital, who are our boundary partners. 6 without loss. Good start for Prithvi. Single on the off towards skipper. That has been the hallmark of Prithvi's inning. Cool, calm and composed. Captain, after hitting a boundary or a 6, he will take a single and rotate the strike. Piyush Meghani had also very good tournament. He has taken some breathtaking catches, runouts, has been good runner between the wicket and a good starter when it comes to beginning of the innings for Sapient Leopards. 7 without loss. Ripple Parekh to bowl to Piyush Meghani. Toss of this match was done by auspicious hands of Mr. Nitin Dalal, the man who saw tomorrow of GCH cricket. Stump to stump, no runs. You got to bowl plenty of those stump to stump deliveries. This is a grassy wicket, and I think we are expecting at least 150 in the first innings. Of course, 15-20 here and there. Oh, beautiful delivery, nipping away at the very last moment, took batter by surprise, and a fantastic over comes to an end. 1 over 7 runs, no wicket. So straight away, skipper to skipper. Now that's the contest you would want to see all the time. Sameer Pankaj Shah wearing jersey number 22, taking on Prithvi Kothari wearing jersey number 28. Wicketkeeper Karan Raj Zaveri standing well up to the stumps. There's a wideish gully, wideish point. There's a deep cover, short extra cover, mid off and a long off on the off. Kavish Parag Zaveri at short mid off. Harshal Shah at wideish long off. Prithvi being watchful. Although it's a grassy wicket, Sameer thought it prudent to start a spin attack from the far end. That's Mahalakshmi end. Another beautiful delivery. Straightening a touch, keeping low. Sameer Pankaj Shah. Prithvi wanted to go for a helicopter shot. Fielded very well by Bhavik. It's a predominantly offside field where Darshil Ketan Shah is at mid-on. Excellent cover drive, but there's a fielder there and a single. Nice throw from Ankit. Lefty-righty combination is creating a doubt in the mind of bowler and a lot of changes in the fielding department when it comes to lefty-righty combination. Kavish, who was at mid-off for a righty, has now become a mid-off for a lefty. So considering his fielding skills, sharp reflexes, Kavish the Kartoos Zaveri. And then Sanju Srivastav, I think, is being brought as a close-in fielder. So first lib is Sanjeev Srivastav. Punched off the back foot,
Very easy picking for Piyush Meghani to start his campaign in the grand finale. Score 9 without loss. Just 2 runs of this over. All seasons Panthers won the toss, invited Sapient Leopards to bat first. Tossed it up and Prithvi hit through the line, finds Kavish Parag Zaveri on the way. End of over number 2, 9 without loss. 9 without loss at the end of 2 overs. Run rate of 4.5. Prithvi on 8 of 9. Piyush on 1 of 3. Ripple 1 over 7 runs, no wicket. Samir Pankaj 1 over 2 runs. Ripple to continue from the pavilion end. Square drive. Look at the way Kavish has positioned himself at the point. That's what is the flexibility of a player. You can field at any position. You should be a 360-degree fielder, and that's what you get a feeling when you look at Kavish Parag Zaveri. 9 without loss. Take his outside edge, goes past third man fans. Outfield is really quick, and this will be first Allied Digital 4 for Piyush Meghani. Boundary number 2. Wide outside the off stump in order to drive it in front of the square. Took the bottom edge and it went past third man fielder in a jiffy. Boundary number 2 of the innings, score 13. Sapient Leopards looking happy with 2 boundaries in 3 overs. This was punished past the extra cover fence, and this will be a light digital 4. Exquisite timing. Piyush Meghani is such kind of a batter who loves the ball to come onto his bat. And look at the way he batted that. Bottom edge, uppish for some time, but no chance whatsoever for the mid-off fielder as the placement was wide. 17 without loss. 2 boundaries for Piyush Meghani. He's on 9, score 17. That ball turned sharply and single towards Ankit at deep cover. 18. Sapient Leopards, while they would be aiming at a wicketless power play, on the other hand, all seasons Panthers realize one thing for sure, that Prithvi is a run machine for Sapient Leopards, and they would want this run machine to halt. Lower full toss. Excellent drive and stopped finally at wideish extra cover. 2 runs to the credit of Prithvi Kothari. Score 20. It's a 20-20 game and score is 20, which is plenty. Now the first big shot from the bat of Prithvi Kothari pulled away, and that will be stopped now by Darshil Ketan Shah. Prithvi finally taking a single. 21 without loss. 3 overs, 21 runs, no wickets. Ripple Parikh, 2 overs, 19 runs. Costly over, 12 runs came of it.
beautiful logo. Samir to continue, gave away 2 runs in his first over, and he would need to bowl a tight line because previous over was an expensive one. 12 came off the previous over, score 21. Down the leg side and wide, collected neatly by Karan Raj Zaveri behind the stumps. Stumps also have a branding, Billmart GCH Cricket Super League. Prithvi goes for a big smash, and that's in the arc, out of the park, and this will be Allied Digital 4. A long hop. Prithvi was always in the full command of that shot. He's a prolific run scorer. And score 26. Or trying to go for a big shot. I think that's the way you would want to play. Take the attack back to the opposition. And Samir is also a very aggressive skipper for sure. He's also trying all the tactics. So that's a comeback by Samir Pankaj Shah. 26 without loss. 4th over in progress. Ball keeping low. We welcome all the viewers on YouTube channel of Garwari Clubhouse. Look at Samir. First delivery was a wide, then there was a boundary, and then 4 consecutive dot balls. That's Samir Pankaj Shah for you. A quick learner from the game. 26 without loss. End of over number 4, 26 without loss. 26 without loss at the end of 4 overs. So the first bowling change. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like Venture Catalysts, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to... Kavish Parag Zaveri is the first bowling change, and he'll be bowling from the pavilion end to Piyush Meghani. You're watching GCH Presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1, and this is the grand finale that's going on between Sapient Leopards and All Seasons Panthers. All Seasons Panthers skipper Samir Pankaj Shah won the toss and invited Sapient Leopards to bat first. We will have a grand prize distribution at around 12:30, 1 o'clock, where a lot of guests are expected today. Meghani to face Kavish. Oh, straighter one. That ball whistled past the batter. Kavish Parag Zaveri is a military medium bowler. Not too quick, not too slow. Prithvi on 15 of 17, Piyush on 10 of 7. That was too full and too wide, given by umpire Rajan Kasbe.
27. Now that was a catch. Oh my God, sliding. Dhairya takes catch. Dhairya means patience and bending on his knees. He took the blessings and Piyush Meghani departs. First bowling change works wonders for all seasons Panthers. Not much feet movement and look at the slider. Dhairya takes the catch. Piyush Meghani caught Dhairya, bowled Kavish Parag Zaveri. First wicket knocked down. So Piyush Meghani gets out for 10 of 10, 27 for 1. That's a very good beginning for Kavish Parag Zaveri. Kavish the Kartoos Zaveri. Kartoos is nothing but the ammunition that's loaded into your gun or into your pistol. Kavish, you will always find him a busy cricketer. Kavish the fielder, Kavish the batter, Kavish the bowler, Kavish the captain. I think after Kishore Kumar, the only all-rounder that I see is Kavish, who can do everything. You ask him to walk on the glass and he will tell you how many miles. I'm ready to walk. 27 for 1. New man in is Josefa Saifi. Josefa missed out on scoring big runs. Yesterday he was able to contribute 20 of 21 and would want to improve on his by data. 27 for 1. Playing with soft ends, a single was always there. Ankit the fielder, 28 for 1. Partnership of 27 runs was broken. Samir Pankaj Shah making smart move to bring in Kavish Parag Zaveri. Remember yesterday Kavish Parag Zaveri bowled from the Mahalakshmi end, but today skipper Samir had other plans. Horses for courses. And that's what you got to do. 28 for 1. Making adjustment at the last minute, Prithvi Kothari finally takes a single. End of over number 5. It's 29 for 1. 29 for 1 after 5 overs. पांच ओवर की समाप्ति पर 29 रन, एक विकेट के नुकसान पर।
So that ball zipping away from the right-hander Josefa. 30 for 1. Darshil Ketan Shah has started bowling from the Mahalakshmi end. That was uppish in the air. Hardly any chance for catch as Ankit was about a couple of meters away from where the ball landed, but lucky escape for the batter and score now 31 for 1. 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ आप देख रहे हैं GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग का पहला साल अंतिम मुकाबला. इस बार पुल कर दिया है, खाली जगह से गुजरती हुई गेंद, तेज कदम भागती हुई, अलाइड डिजिटल चौका. बिल्कुल हाफ ट्रैकर बॉल थी, बड़ा आसान रहा पृथ्वी कोठारी के लिए जिनकी आंखें अब जम चुकी है. बल्ले को स्वाइप करते हुए उठा दिया. मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन. अलाइड डिजिटल चौका. 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 35 for 1. एक और तगड़ा शॉट. अब ये तो बिल्कुल मिसाइल की तरह गया है. पृथ्वी मिसाइल लॉन्च हो चुका है. टप्पा खाती हुई गेंद अब भाग जाएगी. लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये अलाइड डिजिटल चौका. बंद बोतल के अंदर रखा हुआ सोडा जिस तरह ऊपर उछलता है वैसा अब पृथ्वी ने अपने बल्लेबाजी की शैली में बदलाव लाया है. जैसे ही नया गेंदबाज नया अभिगम अपनाते हुए 39 1 विकेट के नुकसान पर. क्योंकि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर भी है. पृथ्वी जो कि मुठार है इस बार बल्ले को सामने रखते हुए रन बटोर लिया. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 1 विकेट के नुकसान पर. Exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. सो ये परिवार के तमाम सदस्य आप देख रहे हैं सेपिएंट लेपर्ड्स टीम के बड़ी संख्या में अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए पधारे हुए हैं. वी वेलकम ऑल ऑफ यू. पृथ्वी कोठारी जो इस वक्त पढ़ रहा है सब पर भारी वो है पृथ्वी कोठारी. सो ये तमाम परिवार के सदस्य इनका हार्दिक स्वागत है. जी हाँ, हम साथ साथ है ये मैसेज उन्होंने दिया है. वी आर विद GCH. कविश पराग जवेरी नए ओवर को प्रारंभ करेंगे. पारी का 7वां ओवर. इस बार उठा दिया है डाउन द ग्राउंड और एक टप्पा खाती हुई गेंद अब मैदान के बाहर 9-2-11 होती हुई. अलाइड डिजिटल चौका. शानदार शॉट. सीटी बज रही है, ताली बज रही है. पृथ्वी कोठारी ने बताया वहां पर पीयूष का आपने विकेट लिया लेकिन खराब गेंद आएगी तो मैं गेंद को बाहर भेजकर ही दम लूंगा. दर्शिल आए थे गेंद को रोकने के लिए, उनके हाथों को छूकर बाउंड्री लाइन पर. 44 for 1. पृथ्वी कोठारी 30 रन पर खेल रहे हैं. 23 गेंदों का सामना किया है. इस बार इंप्रोवाइज करते हुए खेल दिया, स्वीप किया है.
दिलशान स्कूप और गेंद जाएगी बिलमार्ट के बैनर को लगता हुआ, अलाइड डिजिटल चौका। ढूंढा मौका, मारा चौका। बिल्कुल दिलशान स्कूप की याद ताज़ा करता हुआ, पल्लू शॉट भी कहा जाता है जिसे। आसान नहीं होता ये शॉट खेलना, ये आप तभी खेल सकते हैं जब आप 100% सुनिश्चित हैं। 48 पर 1। कविश पराग झवेरी की इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाते हुए यलगार का ऐलान करता हुआ पृथ्वी कोठारी 48 फॉर 1। एक रन पूरा करते हुए भाविक के पास 49 फॉर 1। यूट्यूब के हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग सीजन 1 का अंतिम मुकाबला। ऑल सीजन्स पैंथर्स बॉलिंग कर रही है टॉस जीतकर, बैटिंग कर रही है सेपिएंट लेपर्ड्स। कविश पराग झवेरी गेंद को बहुत अच्छे से ड्रॉप करते हैं। अच्छी वापसी उनके द्वारा। पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगने के बाद एक सिंगल और एक बिंदी गेंद। पृथ्वी 35 पर, हुजैफा 2 पर। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया और गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन पर दर्शिल केतन शाह के पास और 50 रन पूरे होते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 50। 7वां ओवर पारी का 27 के योग पर पहला विकेट गिरा था जब पीयूष मेघानी आउट हुए थे। 23 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप। धीमे से धकेलना चाहते थे विकेटों के सामने संजू श्रीवास्तव, जो कि बहुत अच्छे क्षेत्र रक्षक हैं। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 7 ओवर की समाप्ति 50 पर 1। 7 overs, 50 runs, 1 wicket। एक और बॉलिंग परिवर्तन। संजू श्रीवास्तव अब गेंदबाजी में आजमाइश की जा रही है। हम बहुत आभारी हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर बिलमार्ट ग्रुप, दैट्स इट। विशेष आभार अमोल काड़े साहब, प्रेसिडेंट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अपेक्स काउंसिल, और गौतम भाई शाह। हमारे खिलाड़ियों के ड्रेसेस के स्पॉन्सर है JK एंड कंपनी। क्रिकेट बॉल के प्रायोजक है ईगल इंफ्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कैप्स को स्पॉन्सर किया है नियो डिज़ाइंस ने। बाउंड्रीज स्पॉन्सर किए हैं अलाइड डिजिटल, IT मैनेज्ड रिस्पॉन्सिबली। सिक्सेस स्पॉन्सर्ड बाय समीर पेठे। मैन ऑफ द मैच बाय स्टेनलेस डिज़ाइनर स्टूडियो। क्रिकेट पैड स्लीव्स बाय बीटल लीफ कंपनी। विशेष आभार रीगल स्टील सेंटर ब्रॉडकास्ट पार्टनर, और विशेष आभार वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर, जो कि स्पॉन्सर है सेपिएंट लेपर्ड्स के। सेपिएंट लेपर्ड्स के ओनर है रचित बख्शी और स्पॉन्सर है SBI म्यूचुअल फंड और वेंचर कैटलिस्ट। ऑल सीजन पैंथर्स के ओनर है किरण शेट्टी और लक्षित शेट्टी, और स्पॉन्सर है 99 पैनकेक्स। संजीव श्रीवास्तव, इस प्रतियोगिता में उनके द्वारा भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला गया है। फील्डिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट में स्वयं एक अच्छे कोच भी हैं। इस टूर्नामेंट के पहले ऐसे गेंदबाज बने थे इसी मैदान पर उनके नाम पर फाइफर। 5 विकेटों का अचीवमेंट। नेवर की पहली गेंद कलाइयों से मोड़ दिया, बैकेट ऑफ स्क्वायर रिपल के पास, 1 रन। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन। 8वां ओवर। वाइल्ड लाइफ का थीम दिया गया है, जैगुआर्स, लेपर्ड्स, लायंस, टाइगर्स, पैंथर्स और चीताज। ये एक अच्छी बात है। भारत की वाइल्ड लाइफ को उन्होंने सलाम किया है।
संजय गांधी नेशनल पार्क, बांदीपुर, रणथंभौर, ये नेशनल पार्क में लोग जाते हैं प्राणी देखने के लिए। सबमरीन बॉल सुरहा हो गई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन अगर आपको सभी लोगों को एक साथ देखना है तो ट्रैवल मत कीजिए, इस मैदान पर आइए। यहाँ आपको चीतास भी मिलेंगे, लायंस भी मिलेंगे, लेपर्ड्स भी मिलेंगे, जगुआर्स भी मिलेंगे, टाइगर्स भी मिलेंगे और चीतास भी मिलेंगे। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट बॉलर के सर के ऊपर से उठा दिया था। दर्शिल केतन शाह गेंद को रोकते हुए। पृथ्वी कोठारी ये ऐलान कर चुके हैं कि मैं आज बड़ी पारी खेलने के इरादे के साथ उतरा हूं। 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कल 94 रन नाबाद रहे थे। 20 ओवर बैटिंग की पृथ्वी कोठारी ने। इस बार बॉल टप्पा खाकर बाहर की जानिब कटी थी अंपायर सूर्य जोशी द्वारा। ये वाइड बॉल। सीम पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपनी कलाई के पसीने को गेंद पर लगाते हुए। ट्रेडिशनली ये सही माना गया है, जहाँ पर गेंदों को स्विंग मिलता है। एक तरफ चमक बरकरार रहने से गेंद घूमती है। नीचे रहती हुई गेंद। हुज़ैफा सैफी पॉइंट की ओर खेलते हुए 1 रन। क्रिकेट की हर फील्डिंग पोजीशन का भी एक अलग इतिहास है। जब आप शॉट खेलते हैं तो आपका बल्ला क्योंकि जिस दिशा में पॉइंट करता है उस फील्डिंग की जगह को पॉइंट ये नाम दिया गया है। कवर ये जो नाम है क्योंकि बारिश से बचने के लिए जो कवर होते हैं वो उस जगह रखे जाते हैं, इसलिए उसको कवर नाम दिया गया है क्रिकेट में। इस बार शॉर्ट पिच बॉल थी। क्रीज में डीप जाकर पुल किया। कैच आउट का मौका। कैच हाथ से छूटा। मुश्किल कैच था लेकिन भाविक कर सकते थे। पृथ्वी कोठारी को जीवन दान मिलता हुआ 35 के योग पर। मौका बना था। भाविक को वो कैच लेना जरूरी था क्योंकि आप फाइनल खेल रहे हैं। 55 1 विकेट के नुकसान पर। लेग कटर था। गेंद की लाइन में आया और धकेला समीर पंकज शाह के पास। 1 रन के लिए 8 ओवर समाप्त हुए। 56 रन 1 विकेट। 8 overs 56 runs 1 wicket। कविश पराग जवेरी नया ओवर प्रारंभ करेंगे। 6 की 6 टीमों ने बहुत अच्छा शिद्दत के साथ क्रिकेट खेला। चीताज मुंबई स्टार्स अरमान मलिक साहब की टीम है। उसके स्पॉन्सर थे एएस और डीएससी बीकेसी। ऑल सीजन्स पैंथर्स जिसके ओनर है किरण शेट्टी और लक्षित शेट्टी। उनके स्पॉन्सर है 99 पैनकेक्स। करारा कवर ड्राइव और हर्षल के पास जाती हुई गेंद। हर्षल का थ्रो इसके पहले पहुंचता 2 रन हुज़ैफा सैफी के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट पर 58 रन। इस टूर्नामेंट की एक और टीम थी बालासिनोर टाइगर्स जिसके ओनर प्रतीक शाह। मार्को पोलो लायंस रितेश सुखीजा साहब की टीम और इसके स्पॉन्सर थे इंडिया गेट और लाडू सम्राट। बॉटम एंड 1 रन। सेपियंट लेपर्ड्स जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है उसके ओनर है रचित बख्शी और स्पॉन्सर वेंचर कैटलिस्ट इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर और एसबीआई म्यूचुअल फंड। और जगुआर्स ऑफ ट्रायम्फ नाइट्स इसके ओनर अक्षय भौ और स्पॉन्सर एबीसीएन लॉजिस्टिक्स और वीवा ग्रुप। एक टीम का सपना आज पूरा होगा। पहला जीसीएच
क्रिकेट सुपर लीग जीतने का। इस बार पृथ्वी ने शॉट ऑफर किया, विकेट गिरना तय, कोई गलती नहीं, हर्षल शाह के हाथ में आता हुआ कैच और पृथ्वी कोठारी की पारी समाप्त। 35 पर ड्रॉप किया गया था, 37 पर आउट। पृथ्वी कोठारी कॉट हर्षल शाह, बोल्ड कविश पराग जवेरी, बड़ा विकेट फांस लिया है। बिल्कुल निप बैकर गेंद सीम के सहारे कटी, ऑन दी अप खेला था और हर्षल कैच छोड़ते नहीं। भाविक शाह को भी बहुत राहत मिली होगी क्योंकि उनके हाथ से कैच छूटा था कुछ समय पहले। 59 फॉर 2, 32 रन की भागीदारी समाप्त। नया बैटर है जनक, एलबीडब्ल्यू की अपील और यहां पर आउट जनक। आते ही हल्ला बोल दिया कविश पराग जवेरी ने, एक और बड़ा झटका। जनक पग बाधा हो गए, यानी कि एलबीडब्ल्यू और कविश पराग जवेरी अब यहां पर मिजाज बना चुके हैं। तीसरे विकेट का पतन जनक 0 पर। देखिए किस तरह ये विकेट गिरा, बिल्कुल निप बैकर अंदर की जानिब कटी, नीची रही और पैड के फ्लैप के नीचे गेंद लगी और आउट घोषित किए गए। जनक की पारी समाप्त। सेपियंट लेपर्ड्स एक मजबूत शुरुआत के बाद अब लड़खड़ाते हुए। पृथ्वी कोठारी 37 रन बनाकर आउट हुए और जनक तुरंत आउट हुए। उनकी जगह आते हुए अब नए बल्लेबाज। नए बल्लेबाज है ध्रुमिन। ध्रुमिन ने कल बॉलिंग भी की थी। एक हैंडसम पर्सनालिटी। कविश पराग जवेरी, क्या टूर्नामेंट रहा है उनके लिए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता, अर्धशतक भी जमाया है, विकेटें भी ली है, कैचेस भी लिए हैं। क्रिकेट का पूरा पैकेज है कविश पराग जवेरी। KPZ 59 फॉर 3। ध्रुमिन सामना करेंगे कविश का। बल्ले के मुंह को खोलते हुए निकाल दिया है, थर्ड मैन बाउंड्री की ओर अग्रेसर होती हुई गेंद, तेज कदम भागती हुई, अलाइड डिजिटल चौका। एक ऐसा चौका जिसने चौंका दिया। कविश का ओवर समाप्त। 3 ओवर 20 रन, 3 विकेट, 63 फॉर 3। 63 runs, 3 wickets after 9 overs. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like Venture Catalysts, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like?
And infrastructure? Seamless connectivity? To us. Growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. अभिषेक शाह कल के मैन ऑफ द मैच, 4 ओवर 17 रन 3 विकेटें कल। नए ओवर की शुरुआत करते हुए हुजैफा सैफी बैकफुट पर जाकर खेला है, 1 रन, 64 पर 3। जैसे सुबह हमारी बात हुई आपके साथ में 150 का ट्रैक नज़र आ रहा है, 15-20 रन यहाँ वहाँ, लेकिन अब 150 के अंदर ये स्कोर सिमटेगा, ऐसे दृश्य निर्माण हो रहे हैं। 2 लगातार विकेटें हमने देखी, पृथ्वी कोठारी और जनक। फ्लाइटेड गेंद थी अभिषेक की, पूरी तरह से चकमा दिया। बहुत अच्छा रिलीज था अभिषेक का, हवा में गेंद तैरती हुई आई मानो। (64 for 3) 10th ओवर। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है, 1 रन अंकित के पास रहेगा डीप कवर में। स्कोर 65 for 3। हुजैफा 12 गेंदों में 10 पर, ध्रुमिन 4 बॉल 5। इस बार बॉल नीचे रही, बॉटम एंड। 1 रन करणराज जवेरी वहां पर गए थे, लेकिन कविश ने गेंद को उठाया। 66 for 3, 10वें ओवर की अंतिम गेंद। आप देख रहे हैं GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग सीजन 1, उसका अंतिम मुकाबला। ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर 66 रन 3 विकेट। 10 overs, 66 runs, 3 wickets. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth.
Joining a top investment network, like Venture Catalysts, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? So play resumes. This match slightly in favor of all seasons Panthers at this moment, 66 for 3. As Kavish Parag Zaveri, the submarine ball collected neatly, couple of inches above the ground height by Karan Raj Zaveri. He's wearing his lucky yellow helmet that he has put behind. Sometimes few colors are lucky for you. You have those beliefs and faith. 66 for 3. Kavish drops it in the air, and this time a good strike. Single towards Harshal Shah. Harshal Shah took the prize catch of Prithvi Kothari when he was enticed by Kavish Parag Zaveri to go for an uppish shot. That was the prize wicket. 67 for 3. Kavish is zipping through his overs real quickly. Enjoys his walk. That was wrapped down the pads. Every dot ball will mount pressure on Sapient Leopards. Their current run rate is 6.28. Again, ball touching the pads. 67 for 3, 11th over in progress. Joseph Asefi on 12 of 15, Drumin on 5 of 8. Kavish, 21 runs and 3 wickets so far. 23 balls he has bowled, and this is one of the best overs so far. Just 2 runs of it. 11 overs, 68 for 3. 68 for 3 after 11 overs. Sapient Leopards. An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. Kavish 4 overs 22 for 3. Very impressive bowling record. And now Abhishek to start the fresh over. Josefa punches it off the back foot. No need to run for that. That went like a tracer bullet. Allied Digital 4. What a shot that was by Drumin. Just waited for it, and it was telegraphed to the fence for Allied Digital 4. 72 for 3. They need plenty of those 4s. Long hop, and swipes his bat towards the mid wicket and fielded very well by Sanjeev Srivastav at cow corner. 73 for 3. Flighted delivery, drilled above bowler's head. This will be 4. Hot shot. Allied Digital 4.
स्कोर अपन हर ओवर के बाद दे रहे हैं लेकिन वहां नहीं जा रहा है, उधर नहीं सुना दे रहा है. बड़ा था. Wide ball. A cross-batted shot. Josefa Saifi has started supporting Drumin very well. Drumin has played some breathtaking shots. He's a flamboyant cricketer. Handsome, cool dude with a hot attitude. Drumin. Inside out drive. Samir Pankaj, the fielder. $80 for 3, 12th over. Abhishek yet to get a wicket today. That ball keeping low. Appeal, and yes, he has given him. Yeah, Abhishek, you can't keep him away from taking wickets. That ball kept low and straight in a touch. And Josefa Saifi, LBW Abhishek Shah, 17 of 18 balls. And it's 80 for 4 after 12 overs. 12 overs, 80 runs, 4 wickets. New man in his Vismay, who's added to the squad, missed out yesterday due to some domestic pre-scheduled engagements. Samir Pankaj Shah. Now change of ends for the skipper, and batter facing him would be Drumin. 80 for 4. (27), 59, 59 and 80 are the fall of wickets. Flighted delivery, square driven, and this will be Elite Digital 4. Drumin is in no mood to slow down. Warm welcome given to skipper. Flighted delivery and square driven nicely. There was a dive, but hardly of any use. 84 for 4. Nice delivery. 150 should be the first milestone that they would be aiming at, looking at the batting order of all season's Panthers. 85 for 4, Sapient Leopards, after being invited to bat first by all season's Panthers. Samir Pankaj Shah into his third over.
Wisma plays with soft ends. (86 for 4), 13th over. Dhrumin on 17 of 15. That was a short ball and punished past the square leg fence for Allied Digital 4. Dhrumin the dashing, Dhrumin the dynamic, Dhrumin the daring. See the ball, hit the ball is the mantra for Dhrumin. He has started plundering runs, 21 of 16, quick fire score. He has started just when the chips were down. Oh, that was magic ball. End of over number 13, 90 for 4. 90 for 4 after 13 overs. 13 overs, 90, 90 runs, 4 wickets. Abhishek to start, who claimed a wicket of Huzaifa Saifi. He will be bowling to Wisma Choksi. Flighted delivery, nudged in front of the square for a single. They will go for 2 as well. There was no backup available at the bowler's end. Everyone was so far off. Very intelligent call and very well received. 92 for 4, 14th over, current run rate 6.99. Abhishek has given away 17 runs and claimed one important wicket of Huzaifa Saifi. But it is Kavish Parag Zaveri who is the pick of the bowler today. Played in front of the square once again on the follow through. Stopped by Abhishek Shah. (93 for 4). You are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1, match number 18. This time square cutting it beautifully past the cover point region for Allied Digital 4. I think the entire team management of Sapient Leopards must be happy with Dhrumin. The way he has batted today, everyone has a fire under their belly, but only champions know when to ignite the spark, and that is Dhrumin for you. That was almost from a mezzanine floor, and that was driven, crushed through the cover fence for Allied Digital 4. Full flourish of the bat. Dhrumin, look at the way he executes it. Sort of photogenic moment. It doesn't matter whether you have Canon, Pentax, Konica, Ricoh or Minolta. As long as you have a batter like Dhrumin, you would want to capture it with your camera. The SLRs, 101 for 4, 14th over. Dhrumin on 29 of 19. Oh, what a delivery. Goes under ball. 101 for 4. Abhishek is into his third over. 101 for 4. Another 50 runs from here will certainly give them that firepower. Thickish outside edge, long chase for the fielder. Dhairya stops it before he could go ahead and throw it. 2 runs for Dhrumin. End of over number 14, 103 for 4.
आइए सुबेजा सर, हाँ बता देता हूँ, आइए। मैं वीडियो भी तैयार करके आपको डाल रहा हूँ। डालूंगा, तो डालो आप। that will be good. Yeah, sure sir, sure. It's getting ready. So another good news for all the football lovers as the Soccer World Cup is underway at Qatar. There will be a football fiesta on 17th and 18th of December at Kuprech, organized by GCH. Registration starts tomorrow and will end on 9th. It is for male, female across all the age groups. So if you have football skills in you, go ahead and bend it like Beckham. 103 for 4. Sanju Srivastav, this time what if tickles past the square leg fence, and this will be, oh, nicely stopped. Certainly a saving of 2 runs. Excellent running by Ankit. He travelled as if he was on skates. 2 runs added, 105 for 4, 15th over. Oh, look at that ball. The snorter. That's the ball you would want to bowl. Unplayable, unhittable. Oh, that is certainly a ooh, ah, ouch moment. That ball slanting away from the right-hander. Sanjeev Srivastav has got into the rhythm now. That's where he is so strong at. He's bowling those leg cutters in the channel. Sometimes into the corridor of uncertainty, enticing the batsman to offer the shot. 105 for 4, 15th over. Another beauty. Sanjeev Srivastav on duty. Consistently he is bowling towards one side of the stump, which is a great thing. Normally he would struggle with wide balls sometimes. But today, Sanjeev Srivastav, bang on, spot on. And that's what is required in the grand finale. The quality bowling. Another beautiful delivery. Sapient Leopards need a good partnership. At the same time, they don't have much time now because there will be only 5 overs left after this, and they would need to go for a slog. Single to Vismay, end of 15th over, 106 for 4. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top सो ये रन वॉर्म आप देख रहे हैं जिस तरह से शेप अप हुआ है. 5 ओवर में 29 पर 1, 10वें ओवर में जब हम आते हैं तो 66 पे 3, 15वें ओवर में 103 पर 4. ध्रुमिन ने आज बहुत ही बाहोश पारी खेली है. जीसीएच का मकसद ही है हर क्रिकेटर के अंदर छुपे हुए क्रिकेट को बाहर लाना. आज के दिन बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग प्लेयर, ऐसे कई अवार्ड्स से खिलाड़ियों की नवाजिश की जाएगी. 106 पर 4. ध्रुमिन 21 गेंदों में 31. समीर पंकज शाह आखिरी ओवर करेंगे. 3 ओवर 17 रन, कोई विकेट नहीं. यहाँ पर शायद बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया है. गेंद जा रही है
फाइन लेग की ओर और तेज कदम भागते हुए यहाँ पर रन्स पूरे किए गए। एक 109 पर 4। समीर कल भी विकेट नहीं ले पाए थे, आज भी समीर का विकेट नहीं लेना ये एक थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट के लिए चर्चा का विषय रहेगा। समीर क्योंकि कैप्टन भी है, लेकिन आज कविश ने उनके लिए काम किया, अभिषेक ने विकेटें दिलाई, संजीव श्रीवास्तव ने लाजवाब गेंदबाजी की। डैप कर दिया, यहां पर गेंद जारी है धैर्य के पास, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया है। 110 पर 4। इस बार उठा दिया है, स्ट्रेट एक लकीर खींचते हुए लॉफ्टेड शॉट, लेकिन हर्षल शाह वहां पर उपस्थित और 2 रन भागकर पूरे किए विस्मय चोकसी ने। ध्रुमिन और विस्मय दोनों एक दूसरे को थम्स अप देते हुए कि यस हमने अच्छा खेला है और हमें ही अपनी टीम को इस परिस्थिति से बाहर निकालना है और एक अच्छी स्थिति में लाना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मनस्थिति ये मायने रखती है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो जीत नहीं सकता, लेकिन जिसने मन में जीत को सोचा वो जीत कर ही रहेगा। और देखिए ये एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार कैच ले लिया दर्शिल केतन शाह ने और विस्मय चोकसी की पारी समाप्त। समीर पंकज शाह सही समय पर विकेट लेते हुए पांचवा विकेट गिरता हुआ विस्मय चोकसी बैठक शॉट खेला था, आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाहत, ऊंचाई मिली, दूरी नहीं तय कर पाए और दर्शिल केतन शाह ने कैच लेकर खुशी का इजहार किया। आउट हो गए विस्मय चोकसी, 13 गेंदों में 12 रन बनाए और 112 पर 5। एक बार फिर से हम आभारी है हमारे टाइटल स्पॉन्सर बिलमार्ट ग्रुप, बिलमार्ट दैट्स इट। विशेष आभार अमोल काले जी, प्रेसिडेंट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अपेक्स काउंसिल, और गौतम शाह, apparel partner JK and Company, cricket ball sponsored by Eagle Infra Industries Limited, caps sponsored by Neo Designs, fours by Allied Digital, sixes by Samir Pete, man of the match by Stainless Designer Studio, cricket pad sleeves by Beetle Leaf Company, online pan store with 45 flavors, Venture Catalyst Group जो कि स्पॉन्सर है Sapient Leopards के, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर, और रीगल स्टील सेंटर ब्रॉडकास्ट पार्टनर। समीर के लिए विकेट का जो सूखा पड़ा हुआ था विकेट ले लिया। नए बैटर है ध्रुवित, धीमे से पुश किया ध्रुवित ने, एक रन यहां पर पूरा किया और इसके साथ ही ओवर समाप्त। 113 रन बने हैं। समीर ने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा किया। संजीव श्रीवास्तव अब एक बार फिर से पेविलियन छोर से गेंदबाजी करेंगे। सेपिएंट लेपर्ड्स
इनके मालिक है रचित बख्शी और इनके प्रायोजक है वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप और एसबीआई म्यूचुअल फंड। समीर शाह 4 ओवर 24 रन 1 विकेट। दूसरी और ऑल सीजन पैंथर्स। इनके मालिक है किरण शेट्टी और लक्षित शेट्टी और उनके स्पॉन्सर है 99 पैनकेक्स। GCH कमेटी मेंबर्स, ऑफिस बेरर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फैमिली मेंबर्स और इनवाइटेड गेस्ट, सभी का स्वागत। इस बार संजीव श्रीवास्तव वाइड बॉल से शुरुआत करते हुए। स्ट्राइक पर है ध्रुवित जो कि विकेट कीपर है। कल क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग सेपियंट लेपर्ड्स के लिए उनकी रही थी। श्रीवास्तव की ये गेंद बाहर मुड़ती हुई, जबकि उस गेंद को खेला कविश परग जवेरी के पास 1 रन के लिए। 115 पर 5। अब यहाँ ध्रुमिन किस तरह बल्लेबाजी करते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अब तक उन्होंने आक्रामक और तीखे तेवर अपनाए हैं। क्या वही अंदाज में बल्लेबाजी जारी रहेगी या थोड़ा रुक कर खेलेंगे ध्रुमिन। श्रीवास्तव की पटकी हुई गेंद, क्या पंच लगा दिया था। जबरदस्त आवाज उठी थी, स्टीरियोफोनिक साउंड, और ये लगा अलाइट डिजिटल चौका। क्या पारी खेल रहे ध्रुमिन। जबरदस्त पंच लगा दिया। न कद पड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा, और वो है ध्रुमिन। 23 गेंदों में 36 रन बनाए हैं आज। एक और लाजवाब शॉट, और इस बार भी गेंद जाएगी अला डिजिटल चौका। ध्रुमिन आज एक अलग ही मूड लेकर आए हैं। शानदार शॉट। 24 गेंदों पे 40 पर खेल रहे ध्रुमिन। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। इस बार गेंद को थोड़ा सा धीमा रखा था, गति परिवर्तन, और लेग बाय का 1 रन अंपायर राजन कस्बे द्वारा। 124 पर 5। 17वां ओवर। संजीव अब तक 19 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं हासिल कर पाए हैं। पिछला ओवर अच्छा रहा था उनके लिए, लेकिन ये ओवर थोड़ा खर्चीला। कलाइयों से मोड़ दिया था, डायरेक्ट हिट लगाया वहां पर। एक 125 पर 5। 17वां ओवर। फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बार फिर बताना चाहूंगा, 17 और 18 दिसंबर को कुपरेज मैदान पर डे एंड नाइट फुटबॉल फिएस्टा GCH का रजिस्ट्रेशन कल से लेकर 9 तारीख तक रहेंगे। आप रिसेप्शनिस्ट से संपर्क कर सकते हैं क्लब में। पुरुष स्त्री हर एज ग्रुप के लिए फुटबॉल फिएस्टा इंतज़ार कर रहा है। रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्लब के रिसेप्शन में संपर्क कर सकते हैं। नितिन भाई और क्रिकेट एडवाइजरी एवं स्पोर्ट्स कमेटी का इनिशिएटिव। क्रॉस बैटेड शॉट। महालक्ष्मी क्रिकेट ग्राउंड के घास पर आज हुकूमत दिखाई दी है ध्रुमिन की। 126 पर 5। 17 ओवर। Investment network, like venture catalysts, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? ये स्कोर कार्ड। पृथ्वी आज सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी, 30 गेंदों में 37, 6 अलाइट डिजिटल चौके लगाए। पीयूष मेघानी 10 बॉल 10, 2 अलाइट डिजिटल चौके। हुजैफा सैफी 18 बॉल 17, 1 अलाइट डिजिटल 4। ध्रुमिन शाह 26 गेंदों में 41 नाबाद, 8 अलाइट डिजिटल चौके।
17 एलाइट डिजिटल चौके लगे हैं 17 ओवर में, हर ओवर में एक चौका लगा है। इसका मतलब ये होता है जनक दुर्भाग्यशाली रहे, एलबीडब्ल्यू आउट हुए 0 पर, विस्मय कैच आउट किए गए, 7 एक्स्ट्राज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है 17 ओवर के 17 चौके। नया ओवर लेकर आ रहे हैं अब दर्शिल केतन शाह, 126 फॉर 5, करंट रन रेट 7.41। 150 रन होना जरूरी है। करारा प्रहार और इस बार भी गेंद मैदान के बाहर, एलाइट डिजिटल चौका। महालक्ष्मी क्रिकेट ग्राउंड के घास पर आग लगाने वाला वो चौका था। मैं मारता कम घसीटता ज्यादा हूं। ध्रुमिन 45 पर, 27 गेंदों में 45। 9 एलाइट डिजिटल चौके उन्होंने मारे हैं आज। $131 for 5। बल्ले का भारी सिरा और करणराज झवेरी के ग्लव्स में ताली मारकर गेंद नीचे गिर गई। जी हां, करणराज झवेरी नॉर्मली कैच छोड़ते नहीं है, लेकिन अनपेक्षित ये कैच छूटा। सीम के सहारे कटी गेंद दूर से खेले थे और करण कैच नहीं ले पाने का दुख जरूर रहेगा। 132 पर 5। जो 150 के स्कोर की हम बात कर रहे थे वो संभव है अगर ध्रुमीन वहां खड़े रहें। दबाव भरी परिस्थितियों में क्या पारी खेली आज ध्रुमीन ने। इस बार तगड़ा शॉट और ये समीर पेटे 6। ध्रुमीन अपना अर्धशतक पूरा करते हुए बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की अदा में। व्हाट अ शॉट, हॉट शॉट। मुझे इसी तरह की क्रिकेट आती है, मैंने इसी तरह की क्रिकेट सीखी है। सी द बॉल, हिट द बॉल। 29 गेंदों में 50 रन पूरे किए। इस बार एक और पुल शॉट, गेंद जाती हुई हर्षल के पास, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन तेजी से पूरा करने का प्रयास और 53 पर पहुंचे ध्रुमिन। 140 पर 5, 18 ओवर। Infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. नाम कमा चुके हैं आज ध्रुमिन। 140 पर 5। संजीव श्रीवास्तव अपना आखिरी ओवर करेंगे 21 रन देकर। कोई विकेट नहीं मिला इस बार। बॉल हवा में, करीबी क्षेत्ररक्षक नहीं होने की वजह से 2 रन पूरे किए जाएंगे। वहां पर हर्षल शाह अब गेंद को उठाते हुए 142 पर 5। और यहां पर 3 रनों की दौड़। 143 फॉर 5। कल यही स्कोर चेस किया गया था ऑल सीजन्स पैंथर्स द्वारा, लेकिन आज उससे ज्यादा रन बनाने होंगे चेस करते समय। इस बार टप्पा खाते ही
पुल किया, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर सर्कल के अंदर अभिषेक शाह द्वारा। किसी भी कीमत पर 150 के अंदर सीमित रखना चाहेंगे। बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है। आनंद ने कल क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी सेपियंट लेपर्ड्स के लिए की थी, आज विस्मय आ चुके हैं गेंदबाजी में, वो पैनापन आज देखने मिलेगा। उज़ैफा सैफी भी बॉलिंग कर लेते हैं। एक 5 विकेट पर। तगड़ा पंच लगाते हुए ध्रुवित, यहां पर गेंद जारी हर्षल के पास, हर्षल के हाथ से गेंद छूटी और अब बाउंड्री लाइन के 2 गज अंदर। देखना होगा रुकी है अथवा नहीं। मेरे ख्याल से ये अलाइड डिजिटल चौका। ये सुस्ती महंगी पड़ रही है अब ऑल सीजन पैंथर्स को। हर्षल के हाथ से गेंद क्या छूटी। ध्रुमिन और ध्रुवित, D&D, डैरिंग वाला ध्रुमिन, डैशिंग बल्लेबाजी करने वाला ध्रुवित। 148 पर 5। एक और बढ़िया स्क्वायर कट लगा दिया यहां पर और ये लगा वहां पर दूसरा रन। 150 रन पूरे करते हुए 150 का माइलस्टोन पूरा किया है। एक समय था जब ये भी बनेंगे या नहीं उसका एक सवालिया निशान था, लेकिन 1/3 रन ध्रुमिन ने बनाए हैं। 33% ऑफ द रन्स कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ ध्रुमिन, 54 नॉट आउट ऑफ 32। धीमी गेंद थी, ड्राइव कर दिया। 151, 5 विकेट के नुकसान पर। 151 runs for the loss of 5 wickets after 19 overs. लास्ट ओवर करेंगे अभिषेक शाह। संजीव श्रीवास्तव 4 ओवर 32 रन उनका बॉलिंग विश्लेषण। अभिषेक 28 रन देकर हुजैफा सैफी का विकेट उन्होंने लिया था। 152 पर 5। अब यहां से 160 संभव है। ध्रुमिन अब एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। बहुत ही हैंडसम बल्लेबाजी, हैंडसम क्रिकेटर मार्क वॉक की तरह। स्टाइलिश, भव्य, सजीली बल्लेबाजी। लॉन्ग हॉप, पुल कर दिया, वहां पर कैच आउट का मौका था, हाथ से गेंद छूटी है भाविक के। (153) 5 विकेट पर, 153 फॉर 5। 160 अगर बनते हैं तो 8 का रिक्वायर्ड रन रेट आएगा। वाइड बॉल 154 पर 5, 154 फॉर 5। 55 रनों की पारी ध्रुमिन द्वारा, 16 की पारी ध्रुवित द्वारा। और अब यहां पर स्टंप आउट हो जाएंगे ध्रुवित। स्टंप्ड करणराज जवेरी, बोल्ड अभिषेक। नहीं, मेरे ख्याल से अंपायर ने आउट नहीं दिया है।
और ये नो बॉल। कहानी में ट्विस्ट है। मुद्दई लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। क्या कहानी में ट्विस्ट आया। एकता कपूर की सीरियल भी फीकी पड़ जाए, ऐसा ट्विस्ट ये फाइनल की कहानी में। ये GCH क्रिकेट सुपर लीग है मेरे भाई, यहां कुछ भी हो सकता है। फ्री हिट। उड़ा दिया यहां पर। हर्षल के पास एक बार फिर से थोड़ा ढीलापन, और जहां एक होना चाहिए था वहां दो हासिल किए। स्कोर 157 for 5। $161 for 5. What a shot that is. आड़े बल्ले से खेल दिया वहां पर, तेज कदम भागती हुई, और ये जानदार एलाइट डिजिटल 4। 161 for 5, लास्ट ओवर। ध्रुमिन की पारी को याद रखा जाएगा। 55 रन्स नॉट आउट ऑफ 33 बॉल्स। शानदार तूफानी पारी। और यहां पर स्टंप आउट की अपील। आई थिंक इट्स अ वाइड बॉल। 162 for 5। आखिरी 5 ओवर में प्लॉट मेरे ख्याल से खो दिया। ध्रुमिन ध्रुवित की जोड़ी जब जम गई, बात बन गई सेपियंट लेपर्ड्स के लिए। फ्लाइटेड बॉल उठा दिया वहां पर, बेस बॉल हिट, और ये समीर पेटे 6। यस इट इज। जाते जाते निशान छोड़ जाऊंगा। 168 for 5 after 20 overs. लक्ष्य 169 रनों का, टारगेट 169। सर उठा के सीना चौड़ा करके आता हुआ वहां पर ध्रुमिन और ध्रुवित का जोड़ा। तालियों की गूंज बता रही है यस ध्रुमिन। 168 पर 5। व्हाट अ बैटिंग। अभिषेक 4 ओवर 45 रन 1 विकेट। कल यही अभिषेक 4 ओवर 17 रन 3 विकेट। संजीव श्रीवास्तव आज विकेट नहीं ले पाए। कविश पराग जवीर ने विकेटें ली, लेकिन बहुत जबरदस्त वापसी करते हुए सेपियंट लेपर्ड्स। टीम का स्कोर कार्ड और बॉलिंग एनालिसिस आपके सामने। पृथ्वी 37। अच्छी पारी यहां पर, और अब इनिंग्स ब्रेक में रोलर घुमाया जा रहा है। लौटेंगे कुछ देर बाद जवाब लेकर। धन्यवाद। फाइनल स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। पृथ्वी 37, 55 ध्रुमिन, 28 ध्रुवित। बीस ओवर में 20 एलाइट डिजिटल चौके। ये टॉक ऑफ द टाउन है। 20 ओवर 20 चौके, दैट इज द मंत्रा। सी द बॉल, हिट द बॉल। अगर ऑल सीजन्स पैंथर्स को जीतना है तो 20 चौके उनको भी लगाने पड़ेंगे, या फिर समीर पेटे 6 लगाने पड़ेंगे। 2 समीर पेटे 6, 10 एक्स्ट्रा। ये बॉलिंग कार्ड। कविश पराग जवेरी 4 ओवर 22 रन 3 विकेट। अभिषेक सबसे खर्चीले 4 ओवर 45 रन 1 विकेट। दर्शिल 2 ओवर 25 रन। रिपल पारिक 2 ओवर 19 रन, कोई विकेट नहीं। समीर शाह कैप्टन 4 ओवर 24 रन 1 विकेट। संजीव श्रीवास्तव 4 ओवर 32। पहला विकेट 27 पर, दूसरा 59 पर, तीसरा 59 पर, चौथा 80 पर, और पांचवा 112 पर। एक भव्य पार्टनरशिप 56 रनों की छठे विकेट के लिए
जिसने विजय की बुनियाद रखी है। लौटेंगे कुछ देर बाद दूसरी पारी में। धन्यवाद। A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like venture capitalists, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors.
A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like venture capitalists, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like venture capitalists, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors.
Morning everyone. 120 balls, 169 is the fairy tale ending that all seasons Panthers would want to have against Sapient Leopards. So we are here at Mahalakshmi Cricket Ground under Western Railway Sports Association at Mahalakshmi, Mumbai, and you are watching GCH presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1 Grand Finale between All Seasons Panthers and Sapient Leopards. All Seasons Panthers won the toss, invited Sapient Leopards to bat first. They scored 168 for the loss of 5 wickets, thanks to 56 runs partnership between Dhrumin and Dhruvit, and initially good contribution of 37 odd runs by Captain Prithvi Kothari that made this target possible. So now 169 chase is about to begin as team management having word with both the sides. A team huddle on the ground for Sapient Leopards. Well, Team Sapient Leopards are owned by Rachit Bakshi and sponsored by Venture Catalyst, India's first integrated incubator, and SBI Mutual Fund. On the other hand, All Seasons Panthers is owned by Kiran Shetty and Lakshit Shetty, sponsored by 99 Pancakes. Match officials already on the ground, Surya Joshi and Rajan Kasbe. Scoring done by Arushi Tamse and Prajakta Desai, as match referee is Gokul Bishta. Special thanks to our title sponsor, Billmart. That's it. We would like to appreciate the efforts and would like to thank Shri Amol Kaleji, President of Mumbai Cricket Association's Apex Council, and also Gautam Bhai Shah. Thanks to Billmart Group, MSME Gain is their initiative where there's no collateral. You can get competitive interest rates and finances for your business. The digital processing of your application makes it real quick. So if you think of finances for your business, entrepreneurship, then do reach out to Billmart. In every heart, in every part. We are thankful to apparel partners, JK and Company. Thank you so much, JK Group, for being our sponsor for apparels. Cricket balls are sponsored by Eagle Infra Industries Limited. Beautiful caps are sponsored by Neo Designs. When you think of design, think of Neo Designs. Fours are sponsored by Allied Digital, IT managed responsibly. Sixes are sponsored by Sameer Pethe. Man of the match sponsored by Stainless Designer Studio. Cricket pad sleeves sponsored by Beetle Leaf Company, online pawn store. 45 flavors, 100% tobacco free. Reviving the cultural heritage of India, Beetle Leaf Company. Special thanks to Venture Catalyst Group, who are team sponsor for Sapient Leopards, and Regal Steel Center, who are our broadcast partner. We would also like to thank all the other teams, Jaguar Triumph Knights, owned by Akshay Bho, sponsored by ABC and Logistics and Viva Group. Thank you so much. Marco Polo Lions, Ritesh Sukheja, and sponsors India Gate and Ladu Samrat. Team Balasino Tigers, owned by Pratik Shah, and also Team Cheetahs Mumbai Stars, owned by Arman Malik, sponsored by AS and DSC BKC. Vivek Gupta, I think, is going to bowl the first over. Bhavgi and Kavish are the two openers. Well, good news, good news, good news. On 17th and 18th of December, we have a football fiesta happening at Cooperage Ground. It's a day and night event of GCH. Registration start tomorrow and will end on 9th. And football fiesta is open for male, female, kids, and it is open for all the age groups. Do enroll yourself and take advantage. Start of the first over. Kavish Parag Zaveri straight into the groove. Well, will this be caught? No. And 2 runs for Kavish Parag Zaveri. That was launched beautifully of the very first ball.
It's getting a little murkier. Sun is behind the clouds. Let's score 2. Keeping low, bottom hand and a single, 3. Well, Sapient Leopards have also got good bowling attack. Vivek Gupta, we saw him bowling yesterday. Prithvi Kothari can bowl. Anand can bowl. Danish can bowl. Josefa Saifi can bowl. Vismay Choksi can bowl. Lot of bowling options. Well, and on the other hand, all seasons Panthers, they have got who's who of batting lineup. Bhavik Shah, Kavish Parag Zaveri, Samir Pankaj Shah, Ankit Shah, Abhishek Shah can bat, Harshal Shah, Sanjeev Srivastav. Good depth in the batting department for all seasons Panthers as well. Gupta this time deviating away from the left-hander, straightening a touch. Gathered very well by Dhruvit behind the stumps. $166 more required of 117 balls. We welcome all the YouTube viewers who are watching this telecast live on Garware Clubhouse GCH YouTube channel. That was no ball and a free hit. Umpire Rajan Kasbe. Well, it will be interesting how free hit ball will be taken by Bhavik Shah. Yesterday he had scored 77 not out. So because it was a free hit ball, Bhavik dared to go ahead and pull that ball. Score 4 without loss. 3 for Kavish. Now with that single, score moves on to 5. First one from the bat of Bhavik. Played uppishly like Mark Waugh, and an easy picking. Kavish Parag Zaveri goes. Vivek Gupta delivers gold and beautifully caught there by Dhrumin. Is this going to be Dhrumin's day? Kavish Parag Zaveri not in complete command of that shot. Easily caught. First wicket gone. Kavish Parag Zaveri disappoints in bowling, rather batting department. Happy faces. Harshal Shah comes in at 1 drop. Traditionally, the one-down batters are known to be stone wallers in Test cricket. And I think a bit of red ball approach in white ball cricket is expected at this stage. Building innings is an art. And you have to learn that from Sohail Shah of Cheetah's Mumbai Stars. 2 centuries, not a joke, 2 back-to-back centuries. Sohail Shah, we miss you, Cheetah's Mumbai Stars. Balasinore Tigers, well, what a wicket keeping by Dinesh Patel yesterday. Dino, we are going to certainly miss you, and Arish Mansoori. You guys have been brilliant. Marco Polo Lions, we are going to miss you as well. Ratan, Bakul, the way this team has played, Dilip Agarwal, Chandras. We are definitely going to miss you as well, Marco Polo Lions.
Jaguars of Triumph Knights, well, Rashin, Nimish Vora, Raj Mehta. These are few names that you can't forget. 1 over 6 runs, 1 wicket. Saurabh Zaveri will bowl the next over from Mahalakshmi end. And we may see bowlers like Anand and Danish, Josefa, Vismay. Played with soft hands, a risky single, underhand throw. Not happy Prithvi Kotari with himself. Score is 7 for 1. You are watching GCH Presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1. A successful season. Brainchild of Mr. Nitin Dalal. A very well planned show, very well executed show, and very well enjoyed show of cricket. Life is all about enjoying. Life and cricket both are like ice cream. Enjoy before it melts. Eight for 1. Beautiful delivery, loud appeal, but I think probably missing the stumps. Umpire Surya Joshi had a very good look, but very impressive start by Saurabh. 8 for 1. Current run rate 5.33, required run rate 8.47. And there is a pressure straight away from over number 1. Another beautiful delivery. There's an appeal and yes, he has to go. Saurabh Zaveri now takes the wicket. Thickish outside edge. And what a brilliant catch taken by wicketkeeper Dhruvit. Dhruvit also contributed with bat about 28 odd runs, and that ball settled in his gloves. And all seasons Panthers have lost their second batter. That ball drifting away from the right-hander, took his eyes off the ball, Harshal, and very well caught behind the stumps. 8 for 2, Harshal Shah departs for 2 of 4. And Newman, I think, is going to be Sanjeev Srivastava, I guess. No, I think Karan Raj Zaveri wearing his lucky yellow helmet. This is one match where Karan Raj Zaveri would want to stay at the wicket and play a gutsy knock. He can take a leaf out of the book of Dhrumin or Dhruvit and stay at the wicket. Karan Raj Zaveri.
But what a start. It's an atrocious start for Panthers, but great start for team Sapient Leopards. Sapient Group known for creating happy investors, and Sapient Leopards are known to create happy cricketing moments. Bat and pad together, blocked off the front foot, end of over number 2, 8 for 2. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. So lefty batter Bhavik to face Vivek Gupta. 1 over 6 runs, 1 wicket Gupta. Oh, that ball doing some wonders there. A lateral movement, and that ball had beaten batter and wicketkeeper both for a bye. 9 for 2. 160 still required. Bhavik will have to play a Xerox copy of his innings that he played yesterday, and Karan can certainly play around him. Remember, we saw 20 Allied Digital boundaries in the first innings and 2 Samir Pete sixes. So 20 big shots in 20 overs. That's phenomenal. Wide outside the leg stump and an extra. Not a right kind of throw. Total of 2 added. Wide given by umpire Rajan Kasbe. Score 11 for 2. Another wide. 2 full and 2 wide. I think Vivek is trying to pitch the ball up, probably trying to hit the rib cage, but not getting that success as of now. 12 for 2. That was a good nip backer. Gupta has been a nippy customer. One last match where he would want to seal the deal for Leopards. Oh, beautiful delivery, tantalizing the batter to come forward and play. 12 for 2. Wide ball. Pretty inconsistent in this over Vivek Gupta. Now what's happening is these extras are giving that benefit. We saw 10 extras in the first innings, and these number of extras can definitely be a game changer factor. Wide ball. Lot of wide balls. I think Mr. Extras are the highest scorer as of now in innings number 2. Record run rate hovering around 8.61, 155, record of 105. Coming in round the wicket, and another wide ball. That's a pretty long over. 14 for 2. 4 wides are equal to 1 Allied Digital boundary.
That's how you do the maths. 15 for 2. So finally a legal delivery and a sigh of relief. Everyone would want rhythm. Score 15 for 2. Chasing 169. All seasons Panthers. Oh, another good delivery. Nice takeoff. I think Bhavik Shah will also need to keep one thing in mind. The need for runs and greed for runs. There's a thin, wafer thin difference between need and greed. Oh, once again a beautiful nip backer, but punched very well and no need to run for that. This will be a smooth and silky Allied Digital 4. Just made a room for himself and placed it beautifully. 3 overs, 19 for 2. 3 overs, 19 runs, 2 wickets. Joining a top investment network, like Venture Catalysts, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you Saurabh Zaveri starts the fresh over. Oh, just a one-day dab at direct hit. And that is what the excitement should be. After all, it's a grand finale. Look at that shot. Nothing wrong about it. Picked beautifully. And a nice hit direct on the stumps. Yesterday we saw Prithvi Kothari doing that when all the 3 stumps were in one line and he was able to hit. And that was a prize wicket yesterday by way of a run out. 20 for 2, 4th over. Played behind the stumps. Well, I think single. Fielded well by Vivek Gupta, and it is a leg by. (21 for 2). Saurabh has given away 3 runs and claimed 1 wicket. Wicket of Harshal Shah was caught behind by Dhruvit. Another wicket gone. Karan Raj Zaveri departs. Another beautiful street smart bowling by Saurabh. And brilliantly taken behind the stumps by Dhruvit once again. He's a man with a golden gloves. Karan Raj Zaveri. I must say, anticipation of Dhruvit. Standing well up to the stumps, and look at that appeal. And there goes the finger. Karan Raj Zaveri gets out. All seasons Panthers are succumbed to the pressure. And new man in is Sanjeev Srivastav. 1 yellow helmet replaced by another yellow helmet. Saurabh bowling a tight line. Is it going to be a tragicomic collapse?
Well, we'll have to wait and see. Both these batters will need to do a cosmetic surgery to their innings, which is right now lacking on the commitment. 3 good wickets have gone. Sanjeev Srivastava is the new man in. He will be facing Saurabh. Young Prithvi Kothari has led his side. Leading by example, he has set the benchmark for not just himself but also for his team. That's very important. The way CEO does the benchmarking for his organization, that kind of a commitment. End of over number 4, 21 for 3. 4 overs, 21 runs, 3 wickets. Get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. First bowling change, Vivek Gupta replaced by Vismay Choksi, 21 for 3 after 4. Last 2 overs remaining for the power play. But right now, are they really planning to play a powerful cricket? Time only will tell. Vismay starts with a good length ball, opening the face of the bat. They go for single, 22 for 3. A required run rate going up. 147 runs required of 95 balls. Excellent camera work and production and editing by our technical team. So another single by way of leg by. Second innings is all about Mr. Extras. 23 for 3. Ten extras in 23. Oh, another good carry to the keeper. Vismay Choksi missed out yesterday, but today he is added and he's doing good. So on the leg side, and this is placed well, and this will be Allied Digital 4. First bad ball on the leg side, and Bhavik can easily hit it with a handkerchief on his eyes. Read the ball so well, and just a minor shuffle, and Allied Digital 4. 27 for 3. Another nice placement. This time outfield is again real quick. Allied Digital 4. So pressure is released to an extent. Vismay Choksi is bowling at a pace which can be easily used by Bhavik to dispatch it to the fence. 31 for 3. Bhavik 15 of 16. Sanjeev yet to open his account. 3 batters gone. Kavish Parag Zaveri already got out. Karan Raj Zaveri got out.
and they also lost Harshal Shah. Well, batters to follow certainly have a lot of batters. 5 overs, 32 for 3. 5 overs, 32 for 3. आवाज नहीं जा रहा है ना, मेरे को नहीं लग रहा जा रहा है. आवाज स्लो की है मालूम नहीं, मैं अभी इनको बोला, अभी पता नहीं. देखो आवाज स्लो की है, थोड़ा स्लो किया है. बड़ा करो तो, नहीं तो उधर स्कोर नहीं जाएगा. ठीक है ना, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. 5 overs, 32 runs, 3 wickets. सौरभ ने ओवर की शुरुआत करते हुए यहां पर खतरनाक और खूंखार गेंदबाजी सौरभ की. सौरभ जब जब गेंद हाथ में लेकर दौड़ते हैं ऐसा लग रहा है मानो शिकार करेंगे. जंगल में दौड़े हुए लेपर्ड की तरह शिकार की तरफ अग्रेसर होता हुआ. स्नाइपर जिस तरह अपने शिकार की तलाश में रहता है, वैसा ये तलाश में आज सौरभ. 2 विकेट ले चुके हैं, केवल 3 रन दिए हैं अपने पहले 2 ओवर में. आप देख रहे हैं GCH प्रस्तुत बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग सीजन 1. तगड़ा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, दौड़ने की जरूरत नहीं है. क्या खूबसूरत अंदाज में लगने वाला एलाइट डिजिटल चौका, बल्ले के मध्य भाग में लगता हुआ. नॉन स्ट्राइकर एंड के बैटर और अंपायर के बीच में से निकाला था उस शॉट को. 36 पर 3. एलाइट डिजिटल 4 भाविक के बल्ले से आता हुआ. 19 गेंदों में 20 पर भाविक. धीरे धीरे भाविक अब खुलकर खेल रहे हैं, जो अच्छी बात है ऑल सीजन पैंथर्स के लिए. यहां पर एक और बढ़िया शॉट, गेंद जाएगी आउटफील्ड, काफी तेज है. जी हां, ये भी हो जाएगा. एलाइट डिजिटल होते होते बच गया. विस्मय चौकसी ने लगभग 2 इंच अंदर उस गेंद को रोका था. क्या मखमली स्पर्श था. गेंद जब बल्ले पर आई ऐसा लगा मानो बिलियर्ड्स के टेबल के ऊपर बॉल सरक रही हो. 38 पर 3. 131 की दरकार 87 गेंदों में. जी हाँ, मार्केटिंग विनू मांकट साहब ने 1946-47 के सीरीज में बैटर बिल ब्राउन को जब आउट किया था, तब ये शब्द आया था मांकड डिड, लेकिन फिर उसको मार्केटिंग कहा गया. मांकडी अलग अलग नाम से इसको पहचाना गया. बिल ब्राउन को पता ही नहीं था कि इस तरह आउट हो सकते हैं. बहुत शालीन अंदाज में ये लगा कवर ड्राइव का स्ट्रोक. शानदार एलाइट डिजिटल चौका. क्या नजाकत के साथ अब शॉट्स खेल रहे हैं भाविक. और लेफ्टी बैटर जब कवर ड्राइव लगाते हैं, फ्लिक करते हैं, उसको देखने का एक अलग मजा होता है. 42 पर 3. एक और स्मूथ शॉट, रनों की रंगोली सजाता हुआ एलाइट डिजिटल चौका भाविक के बल्ले से. बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची ने जिस तरह मोनालिसा की तस्वीर बनाई, इसी तरह यहां पर एक रनों की साझा तस्वीर अपने बैट को पेंट ब्रश की तरह घुमाते हुए बहुत नजाकत, नफासत और एहतराम के साथ भाविक अब 22 गेंदों में 30. 46 पर 3. 6वां ओवर, पावर प्ले का आखिरी बॉल.
बिल्कुल बल्ले को सामने रहा है इस बार कोठारी स्वयं वहां मौजूद और ओवर समाप्त होता हुआ छठा। 6 ओवर 46 रन 3 विकेट। 6 overs 46 for 3 chasing 169। पहली पारी में अगर हम देखते हैं तो 40 पर 1 ये स्कोर था पावर प्ले का। 46 पर 3 है इस वक्त। नया ओवर लेकर आएंगे विस्मय चौकसी। सौरभ का पिछला ओवर खर्चीला रहा। विस्मय 1 ओवर 10 रन। भाविक का फॉर्म में आना, भाविक का फॉर्म में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर ऑल सीजन पैंथर्स के लिए। कैप्टन समीर पंकज शाह लगातार चलकर अपने उत्तेजनाओं पर काबू पाते हुए। आसान नहीं होता जब इस तरह के सिचुएशन में मैच चल रहा हो। खिताबी लड़त है। 1 रन संजीव श्रीवास्तव द्वारा। बॉल गई ध्रुमिन के पास जिन्होंने आज 55 रनों की तूफानी पारी खेली। 33 गेंदों का सामना किया। ध्रुमिन ने 37 पृथ्वी ने बनाए, 28 ध्रुवित ने बनाए, जिसकी बदौलत 168 रन का स्कोर खड़ा हो पाया। 47 पर 3 7वां ओवर। हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जीसीएच के यूट्यूब चैनल पर। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण लिया था ऑल सीजन पैंथर्स ने। इस बार इनसाइड आउट खेल दिया और बहुत अच्छे अंदाज में लगने वाला ये समीर बेटे 6। भाविक शाह, ये आराम का मामला है, अब उनके चॉइस का मामला है। उस तरह का शॉट 50 पूरे होते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 पर 3। अब थोड़ी सी मुस्कुराहट लौटती हुई डगआउट में। काफी दूर ड्रॉप किया था, लगभग 8वें 9वें स्टंप पर कोठारी ने उस कवर ड्राइव को रोका। 53 पर 3। इस बार भी बॉल को हवा में ड्रॉप किया था। 1 रन ऑन साइड पर। 54 for 3। संजीव श्रीवास्तव 4 बॉल 1। भाविक 26 बॉल 37। भाविक की पारी यहां निर्णायक रहेगी। ऑल सीजन पैंथर्स को अगर आज विजेता पद की ट्रॉफी अपने साथ ले जानी है, ये भागीदारी भी बहुत अहम रहेगी। वाइड बॉल। स्कोर 55 3 विकेट के नुकसान पर। 55 for 3। वो लोअर फुल टॉस था, चारों खाने चित किया और गेंद जा रही है पीछे लॉन्ग स्टॉप की और बाई के आते हुए 2 रन। गुड जॉब सर, थैंक यू।
इस बार पैरों पर आक्रमण था विस्मय चौकसी ने यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया संजीव श्रीवास्तव को और बड़ा विकेट फांस दिया मायाजाल में विस्मय ने। यह विकेट लेकर विस्मय ने सबको विस्मय में डाल दिया है। संजीव श्रीवास्तव वहां पर नाराज दिख रहे हैं, लेकिन शोइंग एंड डिसेंट विद द अंपायर्स डिसीजन कैन लीड टू अ ट्रबल। छत्तीस रनों की भागीदारी समाप्त होती हुई यहां पर संजीव श्रीवास्तव का विकेट गिरा और नए बैटर है धैर्य शाह और ओवर समाप्त होता हुआ 7 overs 57 for 4। 7 overs 57 for 4, 112 required। नया ओवर लेकर आएंगे आनंद। पहली गेंद काफ़ी अच्छी रही थी, बिल्कुल रविंद्र जडेजा जैसा बॉलिंग एक्शन है इनका। और कल क्या लाजवाब बॉलिंग की थी सेपियंट लेपर्ड्स के लिए। थोड़ा सा अपेश पृथ्वी कोठारी ने जंप जरूर लगाया, लेकिन कोठारी के सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो गई और ये लगा लाइट डिजिटल चौका। भाविक अपना काम कर रहे हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में एक कर्मचारी जब जाता है और प्रोडक्शन देते रहता है, बिल्कुल उस तरह यहाँ पर रनों का प्रोडक्शन जारी है। भाविक के बल्ले से इस बार एक और बढ़िया कवर ड्राइव, लेकिन पृथ्वी कोठारी वहां पर थे। (61 for 4) और यहां पर बैटर और विकेट कीपर दोनों को चकमा देती हुई गेंद कम से कम 2 रन दौड़कर पूरा करेंगे और वहां पर अंपायर सूर्य जोशी वाइड देते हुए कुल मिलाकर 3 रनों का इजाफा 64 पर 4, 64 for 4। इस बार स्वीप किया, वाइडिश स्क्वायर लेग पर खड़े थे फील्डर। पिचहत्तर गेंदों में 105 रन। बहुत ही अफलातून गेंद कही जाएगी, नीचे रहने वाली सबमरीन बॉल।
कदमों का अच्छा इस्तेमाल पृथ्वी के सर के ऊपर से, इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया ड्राइव था इस बार, लेकिन उसे रोकने में कामयाब रहे। 2 रन पूरा करेंगे वहां पर बैटर भाविक शाह। 66 रन 4 विकेट 8 ओवर। 66 for 4 after 8 overs, 103 required of 72 balls. 66 हाँ ठीक है, ते आता 10व्या ओव्हरला दे. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like Venture Catalysts, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? नया ओवर सौंपा गया है दानिश को। उसमें चौकसी को भी एक छोटे स्पेल में इस्तेमाल किया गया। आनंद 1 ओवर 9 रन, कोई विकेट नहीं। दानिश पारी का 9वां ओवर शुरू करेंगे। बैटर है धैर्य। वाइड बॉल से शुरुआत। सेपियंट लेपर्ड्स टीम की गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, वाइड बॉल सिंड्रोम कहा जा सकता है। काफी वाइड बॉल्स अलग अलग गेंदबाजों द्वारा इस पारी के दौरान। बहुत अच्छा बायां पैर आगे लाए, धीमे से धकेला गली में। धैर्य जानते हैं कि मैं भाविक को जितना ज्यादा बल्लेबाजी का अवसर दूंगा उतना हमारी टीम का फायदा हो सकता है, और यही सही तकनीक भी है। प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ, ऐसा एक मुहावरा है क्रिकेट में। अपने संघ के लिए खेले, अपनी टीम के लिए खेले। राउंड द विकेट आते हुए और 1 रन पृथ्वी कोठारी के पास। काउ कॉर्नर पर खड़े पृथ्वी आगे आ गए। जब एशेज के टेस्ट मैच हुआ करते थे तो वाइडिश मिड विकेट पर शॉट्स बहुत कम जाते थे। स्ट्रेट बल्ले से बैटिंग हुआ करती थी उस जमाने में। इस बार चिप शॉट, घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि करीबी क्षेत्र रक्षक नहीं था। 1 रन। आदित्य ने गेंद को रोका। तो इंग्लिश कमेंटेटर्स जो थे ये काफ़ी मस्करे हुआ करते थे और उनको ऐसा लगा कि वाइडिश मिड विकेट पर दिन में 1 या 2 बार बॉल जाती थी और जहां गाय जाके घास चर सकती है, इसलिए उसको काउ कॉर्नर नाम दिया गया। इस बार भाविक ने देखिए बहुत ही मखमली और मुलायमी शॉट खेला। यह अलग बात है कि बॉल बाउंड्री लाइन तक जा नहीं पाएगी। 1 रन जरूर मिलेगा भाविक को। लगातार अपने दूसरे अर्धशतक की तरफ चहलकदमी करते हुए भाविक। स्कोर 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दानिश अपने इस ओवर में 5 रन दे चुके हैं। पहला बॉल वाइड और उसके बाद 4 गेंदों पर 4 सिंगल्स। बैकफुट पर जाकर 1 रन और। 72 for 4। नाइन्थ ओवर आप देख रहे हैं। जीसीएच प्रस्तुत बिलमार्ट जीसीएच क्रिकेट सुपर लीग का पहला साल। इनसाइड आउट शॉट खेला, कैच आउट का मौका था वहां पर, लेकिन गेंद जाएंगी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। लगने वाला ये बेहतरीन आलीशान एलाइड डिजिटल चौका। Overs 76 for 4. There will be drinks interval after this over. And infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors.
76 for 4. Current run rate 8.44, required run rate 8.45. बिल्कुल क्लोज टू फिनिश, नेक टू नेक जिसको फाइट कही जाती है। हलक से जीत निकाल कर लानी होगी। 49 रन्स, 49 रनों की पारी यहां पर भाविक द्वारा। कल भी हाफ सेंचुरी, आज भी क्या वो हाफ सेंचुरी लगाते हैं, लेकिन उनकी हाफ सेंचुरी से ज़्यादा टीम की चैंपियनशिप जीतना ये ज़्यादा मायने रखेगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। वाइड बॉल, आज वाइड बॉल का मानो अंबार लगा है। 12 वाइड्स अब तक, 77 for 4। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, वहां पर गेंद जाएगी आउटफील्ड में। पृथ्वी कोठारी वाइडिश मिड विकेट पर गेंद को रोकने में सफल रहे। अब मिड विकेट ये नाम भी बिल्कुल, क्योंकि विकेट के बीच में ये पोजीशन फील्डिंग की हुआ करती है, इसलिए उसको मिड विकेट नाम दिया गया। अगर आप क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स में जब आप जाते हैं गूगल में, आपको ये सारे जानकारियां आप ले सकते हैं। बढ़िया गेंद, अपील। ध्रुवित ने अपने हाथ ऊपर उठा दिया। हाउ वाज दैट? हाउ वाज दैट अपील का भी एक अपना मजा है। एक अरसा जब डेनिस लिली इसका उपयोग किया करते थे। इस बार उठा दिया है, कैच होना मुश्किल है, और ये समीर पेटे 6 भाविक के बल्ले से आता हुआ और अपना अर्धशतक पूरा किया। अगर ध्रुमिन 6 के साथ हाफ सेंचुरी पूरी कर सकता है तो भाविक भी 6 के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करेगा। इसी को कहते हैं क्रिकेट। जब सिंगल डबल ड्राइव करते हैं तो भाविक किसी चित्रकार की तरह अपना पेंट ब्रश घुमाता है, वैसे अपना बल्ला घुमाते हैं। लेकिन जब चौका छक्के पर अपना बल्ला घुमाता है भाविक, तो ऐसा लग रहा है मानो युद्ध का कोई योद्धा अपनी तलवार का वार कर रहा है। एक ही बल्ला, कभी पेंट ब्रश, कभी तलवार, कभी चित्र, कभी वार, कभी पलटवार। 84 for 4, 55 पर पहुंचे भाविक। आनंद और भाविक में अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्टेस्ट आप देख रहे हैं। फ्लाइटेड बॉल उठा दिया, कैच आउट का मौका है। वहां पर ध्रुमिन ने कोई गलती नहीं की और यहां पर सबसे बड़ा विकेट। आज ध्रुमिन दिन है। आज का दिन 4 दिसंबर नहीं, इट्स अ डी डे, इट्स अ ध्रुमिन डे। जहां ध्रुमिन वहां रन, जहां ध्रुमिन वहां कैच। भाविक ने अपना संयम खोया। इसीलिए कहा जाता है आज भी क्रिकेट में मैच को फिनिश करने वाले बल्लेबाजों की बहुत इज्जत है। भाविक ने पारी अच्छी खेली, लेकिन खिताब तक ले जाने का उनका सपना अधूरा रहेगा। आनंद की तारीफ करनी होगी। आनंद जो है अब विजय आनंद मनाते हुए अपने घुटनों पर देखिए, बिल्कुल ध्रुमिन। इट्स अ डी डे, डी फॉर ध्रुमिन, डी फॉर ध्रुवित। 2 Ds have done the job। 84 पर 5, 39 गेंदों में 55 रनों की विशालकाय पारी खेलकर आउट हुए नए बैटर है अंकित।
17 और 18 दिसंबर को उपरेज फुटबॉल मैदान पर ये फुटबॉल फिएस्टा द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन कल 5 तारीख से लेके गुरुवार 9 तारीख तक आप कर सकते हैं। हर एज ग्रुप और पुरुष महिलाओं के लिए ये फुटबॉल फिएस्टा है। आनंद पिछले 2 दिनों में आनंद अपनी गेंदबाजी में बहुत जबरदस्त धार ला चुके हैं। 10 overs 84 for 5। So welcome back. You are watching GCH Presents Billmart GCH Cricket Super League Season 1. The match is really evenly poised now. 85 more to win. Danish. Dhairya plays it on the onside and single to him. Well, we have a highest score of 55 apiece from both the innings. The only difference is Drumin was not out on 55 and Bhavi got out on 55. That will be the major difference. But the way Prithvi Kothari played, 37 runs, supported very well by Dhruvit towards the later part of the innings with 28. Brilliant wicket keeping, excellent bowling by Saurabh, Anand and now Danish. $85 for 5. Dot ball. We are thankful to our title sponsors, Billmart, that's it. Special thanks to Shri Amol Kale, President Apex Council MCA, and Mr. Gautam Shah. Trying to go for a big whack and missing it. Special thanks to our apparel sponsor, JK and Company. Cricket balls are sponsored by Eagle Infra Industries Limited. Caps sponsored by Neo Designs. Fours are sponsored by Allied Digital, IT managed responsibly. Sixes by Samir Pete. Man of the match by Stainless Designer Studio. Cricket pad sleeves by Beetle Leaf Company. 86 for 5 after 11. For the loss of 5 wickets after 11 overs. $86 for 5 after 11. Danish 2 overs 12 runs. Things are quiet right now for all season Panthers. They need a partnership, and Ankit wearing jersey number 12. Looks like Yuvraj Singh from here. He will have to justify the 12 number. December is the 12th month and he's wearing jersey number 12.
The number that was dominated by Yuvraj, 12-12, his birth date. Nudging in front of the square for single. Cricket is all about applying yourself. You play according to the demand of the situation, and that's what is expected of you. Coming round the wicket, the idea this time, steps forward and drives it. A neat and clean straight drive and single. .88 for 5, another 81 required. Good shot, driving on the onside. Drumin at wideish long on, stopping the ball. Drumin also bowled an over yesterday in place of Huzaifa Saifi when he had that cramp issue. Couple of steps forward. Now Dairya started using feet against the spinners. They will have to be really careful because .90 for 5. Oh, that was an easy catch. Ankit departs. Wicket number 6 gone. Anand is a demolition man now. Just continuing on his success yesterday. Played uppishly and a very easy catch for, I think, Wismay Choksi. Samir Pankaj Shah, skipper, now comes into bat. Captain for crisis is an age-old saying. Bradman, captain for crisis. Gary Sobers, captain for crisis. Stephen Roger Waugh, captain for crisis. Mahendra Singh Dhoni, captain for crisis. Can Samir Pankaj Shah become captain for crisis? Well, not to forget Alistair Cook, man of crisis. Captains have to be thinkers. I mean, people talk about great captains all over the world. A lot of leadership styles. Right from Kapil to Imran to Botham to Martin Crowe to Mahendra Singh Dhoni, Kohli, Sharma, Mike Brearley, I think, is one outstanding name that I would like to mention. Mike Brearley's ability to read the game, and he was always ahead by a couple of overs. So 90 for 6 at the end of 12. 90 for 6 at the end of 12 overs. बार ओवर 48 बॉल 79 टू 6 विकेट गई साहब 4 विकेट बाकी Danish starts from the pavilion end, 2 overs 12 runs for him. Dairya takes a single.
91 for 6. Match at one stage was at a very interesting stage, but ever since Bhavik departed, things have slowed down considerably. Captain Samir to face Danish. Played uppishly, nothing wrong about that shot. That will go to the fence for a fantastic Allied Digital 4. Announcing his arrival on a big stage, Samir Pankaj Shah tossed it up, and what a shot that was. Fantastic Allied Digital 4. 95 for 6. The game is on. Never give up. That's what you got to learn from John Cena. Never give up. $95 for 6. A partnership of about 30 to 40 odd runs from here can certainly bring them back into the match. Current run rate 7.70. Required run rate also manageable 8.88, but they don't have wickets in hand. So stroke selection will matter the most as Samir Pankaj Shah takes a single. They are trying to go for 2. A risky run, but finally the bat is grounded. That's what you got to do. Keep a pressure on the fielders. Look out for the shots in the gaps. 97 for 6. And Samir Pankaj Shah gets out. Another brilliant catch for Dhruvid. Danish does the trick. And it is Samir Pankaj Shah, curtains for him. A rash shot. Inside edge. And Dhruvid doesn't miss those. So 3 Ds doing things for Sapient Leopards. D for dashing, D for dynamic, D for daring, D for dedication, D for devotion, and D for determination. And then again 3D. D for Dhrumin, D for Dhruvid, and D for Danish. 3-dimensional cricket. Sapient Leopards. They are very well deserved to be a champion team the way they have played till now. Well, 44 balls and 72 to win. New man in is Abhishek Shah, popularly known as Abhi in cricketing circles. Worked on the onside for single. They will go for 2. I think they should be able to finish 2. Oh, a bit of clash between the batter and the wicket keeper. Sometimes these keep happening. Intentions were good, but look at that. Oh, jumps over the stump. Appeal this time by Dhruvid. End of over number 13, 99 for 7.
Anand to continue his dream spell. So, on behalf of Garwari Clubhouse, we welcome Shri Ashish Shelar, recently appointed as a treasurer of Board of Control for Cricket in India. Welcome, Ashish ji. He has been doing wonderful job in cricketing fraternity. Welcome, Ashish ji, on behalf of GCH. This time plays uppishly, and that will go past the gully fence. And this will be Allied Digital 4. Welcome, boundary. Inside out shot by Dhairya, and this will be 4 runs. Allied Digital 4. Super batting. Cricket, don't give away your wicket. That's the mantra now from here on. 109 for 7, 60 to win. Single. The game is on. What I like is the game is on. 110 for the loss of 7 wickets. Dhairya on a patient 19 runs, supported very well by Abhishek, 2 of 2. Anand bowls the next delivery. Appeal for LBW. Last ball of the 14th over. End of over number 14, 110 for 7. 110 runs for the loss of 7 wickets after 14 overs. We welcome Shri Ashish Shelarji on behalf of Garwari Clubhouse. जल्दी है ना हम लोग हो जाएगा ना 12:30 110 for 7. Danish to continue. Anand 4 overs 32 runs and 2 wickets. Don't look at the economy rate of Anand. He has claimed 2 important wickets. That's very important. Shuffled across. Leg by. These tailenders can go ahead and script a victory for their side. It's all about applying yourself in the game. Right decision at the right time will make it happen. This time, not a very convincing shot. Wanted to go for a big heave by pulling it up, but that ball travels towards deep third man. Fielded by Vivek Gupta. 112 for 7. Steps forward, plays uppishly, chance of a catch, but ball lands in the triangle between 3 fielders and a single. $114 for 7.
113 for 7, correction. 15th over. Dhairya on 20. Abhishek on 3. Danish into his last over. Now look at that whack. Now this is what you want, a swag in the batting. Abhishek Shah hits that Allied Digital 4. Neat and clean hitting. Steps forward, flighted delivery, nothing wrong about the shot. And you can't set fielding for such shots in the game of cricket. 117 for 7. 52 required. Plays on the onside. They may well go for 2 runs very easily. 119 for 7. 15th over. Drilled above bowler's head. This will be at least a single, if not more. They may well go for 2. Yeah, that's a good commitment. 121 for 7 after 15 overs. 121 runs for the loss of 7 wickets. All season's Panthers chasing 169 against Sapient Leopards. तीस गेंदों में 48 रन चाहिए. बहुत अच्छा इक्वेशन है. केवल 18 का फर्क है. अब यहां से मैच को निकालेगा कौन? अभिषेक और धैर्य ने अगर ये मैच निकाल दिया तो बड़ी बात रहेगी. हमारे मेहमान सम्माननीय आशीष शेलार साहब, जो बीसीसीआई के ट्रेजरर के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए, उनके साथ में नितिन भाई दलाल, क्रिकेटिंग कमेटी, मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टीम ओनर्स, ये तमाम हमारे मेहमान हैं. आशीष जी का काम बोलता है, अच्छी समाज सेवा और साथ में क्रिकेट को भी वक्त दे पाते हैं. अच्छी बात है. स्वयं एडवोकेट हैं, अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी. नए ओवर की शुरुआत यहां पर सौरभ जवेरी द्वारा. इस बार ऑन दी अप हिट कर दिया है. कैच तो छूटा लेकिन 2 रन मिलेंगे. जी हां, ये 2-2 रन कब उन्हें विजय तक ले जाएंगे कोई नहीं जानता. 123 7 विकेट पर. जब आप सड़क से गुजरते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा होता है. बिल्कुल इस वक्त वर्क इन प्रोग्रेस. 123 पर 7. बहुत ही बढ़िया पिक्चर इन पिक्चर ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं. हमारे तमाम मोअज़ीज़ मेहमान इस मैच का मज़ा लेते हुए आप देख रहे हैं. GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग सीज़न 1. 6 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और आज एक टीम को खिताब से नवाजा जाएगा. 2 कदम आगे है, हवा में उठा दिया. पृथ्वी कोठारी गेंद के नीचे. क्या ये कैच होगा? कोठारी ने बाहों को फैलाते हुए कैच ले लिया. धैर्य की पारी समाप्त. धैर्य का धैर्य और संयम टूटा. पृथ्वी कोठारी ने कैच लपका और सौरभ को मिलती हुई एक और कामयाबी. शॉट को बराबर फिनिश नहीं कर पाए थे. बल्ला आधे अधूरे मन से. और पृथ्वी कोठारी जीत के जश्न की शुरुआत हो चुकी है. आउट हो चुके हुए धैर्य 18 गेंदों में 22 रन. 123 8 विकेट के नुकसान पर. ये तमाम हमारे इनवाइटेड गेस्ट्स आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हमारे साथ बने रहेंगे. नया बैटर है दर्शिल केतन शाह. 123 for 8.
इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास था, गेंद पीछे गई और एक रन वहां। कल ऐसी सिचुएशन में हमने देखा था बालासिनोर टाइगर्स को। 16 ओवर 124 पर 8। 124 for 8 after 16 overs. 45 runs required now of remaining 24 balls. $124 for 8. Prithvi Kothari now getting ready to bowl. 124 for 8. Abhishek 8 गेंदों में 11 पर। दर्शिल 0 पर खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं GCH प्रेजेंट्स बिलमार्ट GCH क्रिकेट सुपर लीग का पहला संस्करण, कामयाब संस्करण। बल्ले के मुंह को खोलते हुए एक रन। 125 पर 8। देखिए रन बनेंगे लेकिन विकेट पर रुकना होगा। आज नियमित अंतराल पर विकेटें चली गई, पार्टनरशिप की कमी साफ नजर आई। भाविक एक अहम मौके पर आउट हुए जहां ध्रुमिन ने उनका जो कैच लिया वो टर्निंग पॉइंट था। वाइड बॉल। 126 पर 8। ये हमारे मुख्य मेहमान आप देख सकते हैं सम्मान्य राज के पुरोहित साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उनका शुभागमन हुआ है। उनके साथ में नितिन दलाल जी आप देख सकते हैं, आशीष शेलार साहब, ये हमारे तमाम मोअज़ीज़ मेहमान। द बीटल लीफ कंपनी, आगे आकर ड्राइव किया, वहां पर आदित्य गेंद को रोकने में सफल रहे। उनका थ्रो इसके पहले आता, रन पूरा करने में कामयाब रहे थे। 21 गेंदों में 42 रन चाहिए। ये वो समय है जब एक पिंच हिटर का क्रीज पर रहना बहुत जरूरी था। भाविक, हर्षल, संजीव श्रीवास्तव, कविश, इनमें से अगर एक बड़ा बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर होता तो शायद चित्र बदल सकता था। लेकिन विजय के लक्ष्य के जितना करीब जा पाए हम जाने का प्रयास करें। मैच खत्म नहीं हुआ, कभी कभी एक ओवर काफी होता है मुकद्दर बदलने के लिए। पृथ्वी कोठारी आज 37 रनों की एक बेहतरीन पारी, कल 94 रन नाबाद की पारी। $130 for 8 after 17. 130 runs for the loss of 8 wickets after 17 overs. 39 runs required now of remaining 3 overs. Required run rate 13 per over. We welcome Shri Raj K. Purohit ji with us. We also welcome Ashish Shilar ji with us. We also welcome Board of Directors, Managing Committee members, Cricket Advisory Committee members, family members, everyone here at GCH. Thank you. नंबर उज़ैफा है लेकिन ये 9 नंबर है।
ध्रुमिन ने नए ओवर की शुरुआत की है वाइड बॉल से। बिल्कुल इस 3D की हम बात कर रहे थे, ध्रुमिन, ध्रुवित और दानिश। डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ये 3D हैं सेपियंट लेपर्ड्स के। ध्रुमिन ने आज जिस तरह से बड़ी खुददारी के साथ पारी खेली और सबसे बड़ी बात है मैच को पकड़ कर चले। जो सफ़र इख्तियार करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार खेलने का हौसला तो रखो ध्रुमिन, आप जैसे खिलाड़ियों का हिंदुस्तान के हर सड़क पर लोग इंतज़ार करते हैं। अलाइट डिजिटल चौका। एक 137 पर 8, 32 रन और चाहिए। आज जय और पराजय के बीच की जो लकीर है वो खींची ध्रुमिन ने। 33 गेंदों में 55 रनों की वो पारी। 9 अलाइट डिजिटल चौके उनके बल्ले से ये हाईलाइट रहा। इनसाइड आउट, ऊपर की जानिब खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़। जब विपरीत परिस्थितियां चल रही थी ऐसे में अकेलापन महसूस नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मैं काफ़ी अकेला हूं, मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन ध्रुमिन ने वो नहीं सोचा, मैं अकेला ही काफ़ी हूं, ये उनकी सोच रही और जिसने उनके लिए विजय के द्वार खोले। 139 पर 8, 30 रन और चाहिए। A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like venture capitalists, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. ये विजेता पद और उप विजेता पद के ट्रॉफियां, गिफ्ट हैम्पर्स, मैन ऑफ द मैच। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट फील्डर।
आखिरी 30 रन और 14 गेंदे, ये वो समय था जब स्वैग वाली बल्लेबाजी अपेक्षित थी। पुछल्ले बल्लेबाजों में दर्शिल, केतन शाह आज इतिहास लिख सकते हैं अगर दो बड़े शॉट लगा पाए। इस बार स्ट्रेट ड्राइव, ध्रुमिन के पास जाती हुई गेंद, एक रन और दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं। जी हाँ, दौड़ते रहना होगा, दौड़ते रहना होगा, कीप रनिंग। 141 पर 8, 18वां ओवर। ध्रुमिन गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त 18वें ओवर में। अंदरूनी सिरा लगा, रूबी कट, 1 रन। विकेट कीपर ध्रुवित वहां गए, शॉर्ट फाइन लेग पर। ओवर समाप्त होते हुए 18, 142, 8 विकेट पर। इस बार लॉफ्ट कर दिया है, सीधा साइड स्क्रीन की ओर जाती हुई गेंद, अब जाकर रोका विस्मय चोकसी ने। एक अच्छी बात ऑल सीजन पैंथर्स की देखने मिल रही है कि उन्होंने आखिरी ओवर तक हिम्मत नहीं आ रही है। मौका आते हम प्रहार कर देंगे, वो खौफ ऑल सीजन पैंथर्स का हर वक्त लेपर्ड्स के ऊपर बना हुआ है। 144 पर 8। यहां पर एक और बड़ा शॉट, देखना होगा कैच होगा या नहीं, और ये कैच छूटा है वहां पर ध्रुमिन के हाथ से, और जी हां, अलाइट डिजिटल चौका। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, देयर इज ऑफन अ स्लिप बिटवीन अ कप एंड अ लिप। बिल्कुल वो वाला क्रिकेट यहां पर हो रहा है। इतना आसान कैच ध्रुमिन के हाथ में आता हुआ, उनके हाथ से कैच भी छूटा और अलाइट डिजिटल चौका भी मिला। अब 21 रन चाहिए 9 गेंदों में, 2 बड़े 6 चाहिए, समीर पेटे 6। यहां पर एक और तगड़ा शॉट, और इसके साथ ही अलाइट डिजिटल चौका। मैच गर्म हो गया, मैच अब गर्म हो गया है। 152, 8 विकेट के नुकसान पर अलाइट डिजिटल चौका। दर्शिल केतन शाह अब अपना रंग दिखाते हुए। आठ गेंदे 17 रन, अगली 2 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 बॉल 17। एक 152 पर 8। ये डगआउट का मूड है, एक उम्मीद है चमत्कार हो सकता है, चमत्कार होते हैं। इस बार बॉल हवा में काफी समय तक रहेगी, ध्रुवित के हाथ में आता हुआ कैच, और विकेट नंबर 9 का पतन। आउट हो गए दर्शिल। 17 बॉल में 24 रनों की एक बेहतरीन पारी, और 9वां विकेट का पतन। युवा खिलाड़ी है, थोड़ा अपने आप से नाराज, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, और अब आखिरी बैटर के रूप में मैदान में नए बैटर का आगमन होगा। जी हाँ, देखिए अब ये बच्चों ने भी क्रिकेट का आनंद लिया। समीर पंकज शाह के नूरे नज़र को आप देख सकते हैं। पापा आज एक प्राइज तो जीत कर ही आएंगे। सात गेंदे 17 रन, कितना क्लोज लेकर आए इस मैच को। नए बैटर है निकुंज।
ये हमारे गेस्ट को आप देख सकते हैं, आशीष शेलार जी और राज के पुरोहित जी। आपकी उपस्थिति ने ही इस कार्यक्रम की शोभा में अभिवृद्धि की है। 153 for 9 after 19. आखिरी 6 बॉल का खेल शेष। 6 बॉल में 16 रन चाहिए और पहली 4 गेंदों में रिजल्ट मिल जाएगा। निकुंज है आखिरी बल्लेबाज, सामना करेंगे वहां पर ध्रुमिन का। बैठक शॉट खेला है, वहां पर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, और जी हां, ये लगा अलाइड डिजिटल चौका। हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं, मैं अपनी पारी को सजाता हूं, मैं निकुंज हूं। ये बड़ी बात है। कौन हारेगा कौन जीतेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। जीसीएच जीत चुका है, जीसीएच का क्रिकेट जीत चुका है, पहला सीजन सुपरहिट हो चुका है। 5 गेंदे 12 रन। क्या निकुंज आज विजय का इतिहास लिखेंगे? एक और तगड़ा शॉट, और इस बार 1 रन पूरा किया, यानी कि अब 4 गेंदे और 11 रन। अभिषेक शाह ने अगर इसको पूरा कर लिया तो मानो इसको बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। आड़े बल्ले से खेल दिया है, वहां पर गेंद जा रही है। अब 1 रन को पूरा किया है, दूसरे की दौड़ लगाना चाहेंगे, वहां पर आउट होने का खतरा भी है। 2 रन पूरे करते हुए 3 बॉल 9 रन। तीन बॉल 9। क्या विजय का इतिहास लिख पाएगा अभिषेक? 3 बॉल 9 रन। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक क्या अभिषेक अपने पास रख पाएंगे? 3 balls and 9 runs to win। यहां पर एक तगड़ा शॉट और एलाइड डिजिटल चौका। दो बॉल 5 रन। 2 बॉल 5 रन। अगर 4 बनते हैं तो सुपर ओवर हो जाएगा। 5 में जीत। ऑल सीजन्स पैंथर्स, ये तो कमाल हो गया। वाइड बॉल, 2 बॉल 4 रन। अब मुझे यहां पर बचपन में पंचतंत्र की कछुए और खरगोश की कहानी याद आती है। कछुए और खरगोश में लगी हुई रेस का यहां पर दृश्य। 1 रन पूरा कर लिया है, जी हां। इसके साथ ही यहां पर दूसरा रन पूरा कर लेंगे और तीसरे की दौड़ लगाना चाहते थे, वहां पर दौड़ चुके हैं, जी हां। स्कोर्स आर लेवर्ड। अब यहां से मैच हार नहीं सकते, या तो सुपर ओवर होगा या तो जीत जाएंगे। क्या बैटिंग कर रहे हैं अभिषेक शाह। मुझे पेप्सी का एड याद आता है, ओ यस अभी। अभी ने अभी बनाया, अभी नहीं तो कभी नहीं। 1 बॉल 1 रन।
Nikunj do that? सुपर डुपर हिट, इसीलिए कहा जाता है कि आखिरी वक्त तक हार न माने। और ये फाइनल को जीत लिया है ऑल सीजन पैंथर्स ने। ये क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहां क्या होगा कोई नहीं जानता। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। क्या कमी रह गई समझो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। व्हाट अ विक्ट्री। अभिनंदन 169 फॉर 9। आखिरी बॉल पे भी सब कुछ हो सकता है, नेवर गिव अप। जब जब आप अपने जीवन में मायूस हो, ये मैच को देखिए। ये आपके अंदर का विजेता पैदा करेगा। अभिषेक शाह, निकुंज, ओ यस अभी, मैं मैच जीतूंगा अभी के अभी, नहीं कभी कभी, क्योंकि मैं हूं अभी। एंड व्हाट अ विक्ट्री। आखिरकार आज पूरे पाटन में भी खुशियों का वातावरण शायद देखने मिल सकता है, जिस हिसाब से इस मैच को जिताया। अनबिलीवेबल। 10 में से 9.95 लोगों को लगा था कि यह मैच ऑल सीजन पैंथर्स जीत नहीं सकते, लेकिन जैसा बताया कि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैच जीत गए, मैच भी जीता, दिल भी जीता। आखिरकार ये विजय गरवारे क्लब हाउस की है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। आखिरकार एक ही विजेता हो सकता था, एक ही चैंपियन बन सकता था, और वो चैंपियन है ऑल सीजन्स पैंथर्स। कांग्रेचुलेशंस एंड कांग्रेचुलेशंस टू सेपियंट लेपर्ड्स। कांग्रेचुलेशंस टू Kiran Shetty and Lakshit Shetty, 99 Pancakes. Congratulations to Sapient Leopards, Rachit Bakshi, Venture Catalyst, India's first integrated incubator and SBI Mutual Fund. Match summary. ध्रुमिन शाह 33 गेंदों में 55 रन बनाए, लेकिन उनके हाथ से वो जो कैच छूटा और चौका गया, उसने मौका बनाया। पृथ्वी कोठारी 30 बॉल 37, कविश 4 ओवर 22 रन 3 विकेट, और भाविक शाह 39 गेंदों में 55, दर्शिल 17 बॉल 24, अभिषेक 14 बॉल 22, धैर्य 18 बॉल 22, सौरभ जवेरी 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। लेकिन आखिरकार जो जीता वही सिकंदर। आइए सीधा चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। धन्यवाद।
A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like venture capitalists, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like venture capitalists, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors.
A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like venture capitalists, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors. A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like venture capitalists, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us, growth is when we help you get closer to your dreams. Sapient, creating happy investors.
A startup space provides many opportunities for you to grow your wealth. Joining a top investment network, like venture capitalists, which selects the top 1% of startups, is the greatest method to make wealth. By diversifying your investment portfolios enables you to exit a startup at the right time. What does growth look like? An infrastructure? Seamless connectivity? To us. Hello. Growth is Yeah. when we help you get... Good afternoon, everyone. We are about to start the... Hello. We are about to start the prize ceremony. I shall request upon all the managing committee members of the club and all the team and together prize distribution ceremony. Thank you so much. And now I hand it over to Shri Ganesh Iyer to take the proceedings from here on. Thank you so much. Could we have all the team players and officials near the dais, please? Please switch off the another mic. Team players, team officials, Gokul Bist. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are here for the first edition of the GCH Cricket Super League 22, sponsored by Billmart. And what a cracker of a tournament. Each of the matches went to the wire. Thanks to some fielders, they were all very close contests. And it made a great difference towards playing cricket as cricket is to be played. To win, but to win fair and square, and not win by any other methods. As we welcome our Vice President, Sri Raj Purohit ji, I must also on behalf of the advisory committee thank the President, Sri Sharad Pawar Saab, who automatically agreed for such a tournament at the highest level. May I request Sri Nitin Dalal to hand over a bouquet to our Vice President, Sri Raj Purohit ji. And फोटोग्राफर खत्म हो तो थम्स अप दिखा मेरे को, तो समझेगा ना. Another bouquet, Nitin bhai, to Mr. Manish Ajmera, the honorary treasurer of the Garware Clubhouse. On whom we will depend for release of all payments. I would also request you, Nitin bhai, to present a bouquet to the Joint Secretary of the Mumbai Cricket Association, Sri Deepak Patil, who himself participated in this tournament and raised the level we have with us
Shri Sanjay Naik, the former secretary of the Mumbai Cricket Association. Nitin Bhai, could you please present a bouquet to him? He also participated in the tournament, played a great role, and some good knocks right through the tournament that he had. And may I request Manish Ajmera ji to honor Pramod Yadav, Managing Committee member of the Apex Council of the Mumbai Cricket Association. Manish Ajmera ji, one more honors that you have to do, and to honor Mr. Mangesh Satham. Mangesh Satham is the the tournament secretary of the Mumbai Cricket Association, member of the Apex Council, and one of the finest leg spinners who didn't play in this tournament. May I now request Shri Raj Purosh ji, the Vice President of our club, to say a few words. Manoj ji, Nitin ji Dalal, Moju Chaturvedi, Sanjay ji, Nanesh ji, Pankaj ji, ऑफिस बेयरर्स और एमसीए, नितिन जी के साथ पूरे लीग में जिन्होंने फुल कोऑपरेशन दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स एंड द सपोर्टर्स. ऑल्सो आई कॉन्ग्रेचुलेट्स द विनर टीम फॉर ब्यूटिफुल presentation. Panthers बहुत अच्छे खेले. On the behalf of the Garware Club and cricket fraternity, I wish all of them congratulations, best of luck. And the runner team, they done beautiful. बहुत ही सुंदर उन्होंने संघर्ष किया और छोटे से डिफरेंस से वो रनर अप रहे. उनको भी मैं शुभकामना देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं. लेपर्ड्स का टीम का, पैंथर्स एंड लेपर्ड्स टीम दो. नितिन भाई, जो वेस्टर्न रेलवे के इस क्रिकेट ग्राउंड में गरवारे क्लब के सहयोग से वास्तव में इतना सुंदर लीग का कार्यक्रम रहा. आप सब लोगों ने जिस उत्साह के साथ इस क्रिकेट मैच में भाग लिया, भाग तो सब लेते हैं, हार जीत होती है, पर ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स को अपन दिल से खेलते हैं. मैं इस सारे प्रयासों को जरा एक बार जिन जिन लोगों ने इसमें काम किया, सहयोग किया, नितिन भाई और उनकी टीम को जोरदार तालियां एकदम हिप हिप. और आज मैं ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजिंग कमेटी एंड द बिहाफ ऑफ द गरवारे क्लब, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं जो यहां खेले और गरवारे क्लब के मेंबर है और यहां देखने आए. कुछ यहां बहनें आई है जो परिवार की मेंबर्स हैं, अपने भाई का या पति का मैच देखने आए हैं. कुल मिला के सुंदर जगह, सुंदर मैच, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन. ये हमारे गरवारे क्लब के लिए और आगे भी, ये तो सही मायने में शुरुआत है
एक आने वाला क्रिकेट का जो माहौल गरवारे क्लब में बनने वाला है उसका ट्रेलर है. दिस इज अ ट्रेलर. अभी ट्रेलर इतना सुंदर है तो आगे भविष्य कितना अच्छा होगा. मैं एक ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ गरवारे क्लब, द मेंबर ऑफ द गरवारे क्लब, दोस्तों आने वाले समय में जो काम गरवारे क्लब में चल रहे हैं, जो एक्टिविटी संजय भाई चल रही है, जो उत्साह गरवारे क्लब के मैनेजिंग कमेटी के डायरेक्टर्स में है, जो इस स्पोर्ट्स में उत्साह बता रहे हैं, वो टीटी हो, चेस हो, बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, इन एवरी फील्ड ऑफ द स्पोर्ट्स गरवारे क्लब इज डूइंग वंडरफुल. और आने वाले समय में और गरवारे क्लब अपना नाम करेगा, स्पोर्ट्स में भी नाम करेगा, गरवारे क्लब की जो फैसिलिटीज है उसमें भी नाम करेगा. आज टीटी वाले मिले कि उनको मैच करना है, मोहित भाई मिले कि उनको आगे चेस में काम करना है, और भी लोग जो है वो गरवारे क्लब का नाम रोशन करने वाले हैं. मित्रों, आने वाले समय में गरवारे क्लब सिर्फ मुंबई शहर का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन द इंडिया होगा, ऐसा मेरा पूरा सपना है और हम सबका सपना है. और वो सपना आपके कारण सफल होगा. वो सपना है जो आपकी मेहनत के कारण सफल होगा. और वो जो सपना है, मनीष भाई जैसे रात दिन नहीं देख के, मुझे मालूम है अमेरिका में थे, एमसीए के चुनाव है, शरीर उनका वहां था, आत्मा उनकी यहां थी. और आने के बाद शुरुआत करके गए थे क्रिकेट का, और रोज फोन करते थे, चाले छे चिंता करवानी नहीं. इनको मालूम है कि राजकीय पुरोहित को क्रिकेट का जीरो नॉलेज है. तो मुझे भी बोले आप पीछे मत रहो, बस हमको पीठ पे शाबाशी देते रहो, वी विल डू द वंडरफुल. और उन्होंने वंडरफुल करके गरवारे क्लब की टीम ने, दूसरी टीम ने, दूसरे सब खिलाड़ियों ने जिन्होंने सहयोग दिया, बहुत सुंदर किया. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आज माहौल बना है, आज जो स्पिरिट यहां हुई है निर्माण, वो आगे भी बनी रहे, आगे भी हम खेलते रहे. ऑन बिहाफ ऑफ द लास्ट, ऑन द बिहाफ ऑफ द गरवारे क्लब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके पीछे गरवारे क्लब मैनेजिंग कमेटी एंड गरवारे क्लब तन, मन और धन से खड़ा रहेगा, तीनों से खड़ा रहेगा. और अभी एक और फुटबॉल लीग का भी गरवारे क्लब में जो पहले नहीं था, मनीष भाई और उनके साथियों ने, नितिन भाई ने, उनके साथियों ने, फुटबॉल की लीग भी हम कभी देखे तो 6 खिलाड़ी थे, 8 थे. मैं डर गया कि ये तो टाइम भी जा रहा है और पैसा भी जा रहा है. नितिन भाई ने कल कहा 50 लोग फुटबॉल लीग में जमा हो चुके हैं. दिस इज अचीवमेंट. और जैसा क्रिकेट का यहां माहौल बन रहा है, थोड़े समय बाद गरवारे क्लब में फुटबॉल का भी ऐसा ही माहौल बनेगा. इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं. आप इसी तरह से माहौल बनाते रहे, मैं ये कहना विनती करता हूं. फिर से आप सबका धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, Vice President Sri Raj Purohit ji. Small thing about this tournament, not taking much time. I know you're eager to collect your prizes. A small thing about this tournament. About 6 to 7 months ago, Nitin Bhai suddenly called up and said, we need to do a professional tournament so that in the next 3 years, having already qualified for the Kanga League, we have a team of our own members. And this was the first step towards making a team for the future. I think we have set the precedent. We have seen some great performances and will continue to see some great performances in the years to come. It happens to the vision Nitin Dalal, first seed Nitin Dalal, watered by all of us, will bear fruit.
Nitin bhai, I think it's time you speak a few words sometimes. Here is the mic for you. Before Nitin Bhai speaks, I talked to Nitin Bhai so many times. गरवारे क्लब, यहाँ मोहित जी है, पहले भी कई बार साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गरवारे क्लब ने रिप्रेजेंटेशन किया है. नितिन जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और फोर्सफुल रिक्वेस्ट है कि ये तो या तो अच्छा हो ही रहा है और या तो आप आगे करते ही रहेंगे, पर गरवारे क्लब मस्ट गो आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनली. जोर से ताली बजाइए जरा, ये तालियों में मजा नहीं है, ये तो सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचने की ताली है. दुबई नहीं, लॉर्ड्स के वो कोई है ना लंदन में कुछ, हाँ तो ऐसा बोलो ना, हाँ ऊंची चोस. तो नितिन भाई, गरवारे क्लब दुनिया में जहां जहां अच्छे क्रिकेट की टीम्स है, अच्छे मैदान है, वेलिंगटन है, लॉर्ड्स है, साउथ अफ्रीका है, अपनी गरवारे की टीम जाए और उनकी टीम को वहां हरा के आए और गरवारे का नाम रोशन करे, उसके लिए गरवारे क्लब आपके साथ खड़ा रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं. Thank you everybody. Good afternoon all of you. My Vice President Mr. Raj Purohit ji, my Treasurer Manish Ajmera, my committee member Mr. Mohit Chaturvedi, Nainesh Sanghvi, Pankaj Shah, and from MCA we have got Deepak Patil, who is the Joint Secretary of Mumbai Cricket Association, Mr. Sanjay Naik, who is going to contest for Vice President on 9th. We wish him all the best. And we have Mr. Pramod Yadav and Mr. Mangesh Satam with us, who is the Managing Committee member. First of all, I would like to say I thank all of you for making this tournament a great success. It's a great game of cricket has won the game. It is not individual, it's a game of cricket which has won the game, and I congratulate the winning team of today's. The game was very fantastic. 1 run, 1 ball, I said it will go for super over. But congratulations to Sapient. All season. And runner-up, I am very sorry, but you played very well, you fought very well. It went up to the last ball, anybody's game. After all, the game of cricket has won. Not anybody has won. It's a game of cricket has won. I thank everybody. I thank all the sponsors who have come inside and roped in their money. From the very beginning, I was after them, sir. Yes. I was after them from America to get into this thing. I was not getting a single team when I was there. When I came back, I started moving my balls. And Kiran Shetty was the one. Marco Polo was there. Then we had so many Balasinos in Balasino Tigers, and all these guys were there. So it was very fun of them. It was very nice that they came in for the money. It was very good. Thank you very much again to my managing committee for giving me the pushback, and it was very fun, and thank you very much for that. And I request now Ganesh Iyer to proceed, and I request. Thank you, sir. Thank you, Nitin bhai. As he rightly mentioned, the success of this tournament started on the day when 6 gentlemen and team of gentlemen joined hands to make this happen. And we'll honor each and every one of them. Mr. Kiran Shetty of All Seasons Panthers to please correct a plat from Nitin Dalal. All three have to come. Yeah, all 3 can come. Come, I'm here. Madam. Kiran bhai, madam. Mohit, come. Madam, please. Madam. Come.
आज के लिए 50 सर 50 सर बिल माफ ना सब बिल मार्ट की जगह बिल माफ May I request Rachit Bakshi to collect his team of owners, and collect a memento from Nitin Dalal. Well played, Sapient. Akshay Bo of Jaguars of Triumph Knights from Rajpurohit ji. Mr. Sanjay Naik of Cheetahs of Mumbai Stars from Rajpurohit ji. Pratik Shah of Balasino Tigers from Manish Ajmera. All the owners, Sachin Bhai and Dharmesh ji, Sachin Bhai and Dharmesh ji, please collect on behalf of Balasino Tigers. And now to the man who collected all the guys in the pool to make a team called Marco Polo, Ritesh Sukija, along with his owners, co-owners, including Mr. Dalal from Manish Ajmera. So guys, we will continue and we are thankful to all the sponsors for their support, without which this tournament would not be a success. So as a token of appreciation, we would like to present a memento to all these sponsors. Firstly, we would like to call Mr. Gautam Shah of Messrs. Billmart Fintech Private Limited. Mr. Suresh Samarth, if you can come and collect the memento. Okay. That's fine. Okay. I request Mr. Kunal Kapadia of Messrs. JK and Company to collect his memento. Mr. Jayesh Bhai, please collect on behalf of Kunal from Mr. Raj K. Purohit ji. पहले नाम बोलता हूँ. I request Mr. Ripple Parikh to come over and please present Mr. Path Mistry of Mrs. Neo Design, a token of appreciation in center. Hitesh bhai, तुम्हारे जो honor. I request Mr. Hitesh Shah to come and present a memento to Mr. Prakash Shah of Messrs. Elite Digital Services Limited. Samir Shah, please come and collect on behalf of Mr. Prakash Shah. Samir, please stay there. Samir. Mr. Vikram Jain of Messrs. Stainless Designer Studio. He's not there.
Bakul Bhai, please collect on behalf of Mr. Vikram Jain. Bakul Bhai, please present a memento to Mr. Prem Raja of Messrs. The Beetle Leaf Company. I request Mr. Rachit Bakshi to come and collect on behalf of him. I request Mr. Haren Vora to come over, and Haren Bhai, please come. And present memento to Mr. Samir Pete for his famous sixes. I request Mr. Jitendra Goyal to come and present memento to Mr. Hitesh Solanki of Messrs. Eagle Infra India Limited. I request Mr. Deepak Patil to collect on his behalf, please. Eagles. I request Mr. Umesh Nawale to come and collect memento for Mr. Bhupesh Jain of Messrs. Regal Steel Center. I request Mr. B.V. Acharya to come over. Acharya ji, please come. And this is on behalf of Mr. Anuj Golecha of Messrs. Venture Catalysts. Rachit Bakshi, please come. Request Ganesh Iyer to come, please, and present memento to Mr. Manish Ajmera of Messrs. Adamo Hospitality. I request Mr. Jayesh Kapadia to come and present memento to Mr. Surya Kumar Kanoja of Messrs. Virat Apparels. Mr. Bakul Mistry will collect. And now for the final presentations, let me invite first two umpires, Mr. Surya Joshi and Rajan Kasbe, for umpiring in the final match. I request scorers Aroshi Tamse and Prajakta Desai to come over. In our effort to promote women's cricket and participation of women's cricket in greater level, these girls over the last 10 days have meticulously kept scores, including statistics, for the tournament. Need a special round of applause, gentlemen. I request our physio, Ms. Dimple Maniar, to please come forward. And now, I request our coach, Mr. Gokul Bista, to please come forward. Man behind all this cricketers.
Without him, this wouldn't be possible. Thank you so much, Bista sir, for your support, for your help and coaching us. It's been a fabulous tournament, and I would request Mr. Anand Kothari from Sapient Lions to come forward and accept the award and prize money of rupees 5,000 for the best bowler of the series. Mr. Ratilal Shah, I would request Mr. Ratilal Shah to come forward and present the Anand Kothari's figures are 7 matches, 9 wickets, 6.44 economy rate. And his close competitor was Samir Shah. His economy was 6.77 and Anand's was 6.44. I request Mr. Sohail Shah from Bombay Stars Cheetahs to come forward and accept the award and prize money of rupees 5,000 for the best batsman. Mr. Mohit Chaturvedi will present the award. Sohail Shah has scored 2 centuries in the tournament. Scored 263 runs at the average of 131.50. Now we have best fielder of the tournament, Mr. Nimish Vora. And I would say Mr. Marco Polo will give me this award. ये सही है. अरे अबाव 40 को थोड़ी देता है प्राइस. बोलो अबाव 40. हाँ आएगा वो. वाह वाह वाह. एक तो झापटी ले तो बैंक वाले. And most awaited award, I request Mr. Prithvi Kothari from Sapient Lions to come forward and accept the award and prize money of rupees 25,000 for man of the series. Mr. Naidesh Sangvi, please present the award. वो तो बोल दिया, नहीं बाकी है. Prithvi wait. Prithvi is also awarded from Adamo Hospitality for 2 nights to Goa. Thursday. Prithvi, I'll come with you. Prithvi scored 323 runs and he also took 7 wickets. And here comes the final presentation for the final matches. Yep. So sorry. Sorry guys, I'm interrupting everything right now. But what has happened is I have forgotten my committee members who have helped me a lot during this season, this tournament. I would like to say Mr. Nimish Vora, Jayesh Kapadia, Bakul Mistri, Hitesh Shah, Umesh Devale, Jitendra Gala and Mr. Haren Vora and Mr. Ganesh Iyer, who is the commissioner of this tournament. And Mr. Jayesh Kapadia is the vice commissioner. So he is only coming for opening and closing. The other time he is always in Bangkok.
And I thank everybody, those who have helped me a lot. Kiran Shetty sir, thank you very much. Ladu Samrat, thank you. And all the ground staff and everybody who have helped. And Ganesh Iyer, who has done a lot for me in making the tournament, this thing, what you call as the law and everything. Next year, we will see that it will be very competitive. Everything will be strict. All the phone calls will be kept into the one thing, in the one dressing room. Nobody will be allowed to carry the, what you call, phones, mobiles in a dressing room, as well as in the dugout area. Also, no other players will be allowed in the dugout area, which will be very strict. We will be going professionally next year. And we will be adding 2 more teams next year. That will be for 5 lakhs rupees. For 2 lakhs, this team will be continuing, sir. Bidding price will be 5 lakhs for 2 teams. Thank you. So guys, any guesses for the man of the match for the finals? Okay, I request Mr. Bhavik Shah from All Seasons Leopards to come forward and accept the award and give voucher for man of the match for the finals. Bhavik scored 55 runs in the finals in 39 balls. Okay, now I request Captain of Sapient Lions, Mr. Prithvi Kothari, to come on the dais along with the team members and accept the trophy and prize money of rupees 50,000 for runners-up of first season of Billmart GCH Cricket Super League. All players, please come and collect your medals, please. Sapient Leopards, sir. मेडल भी आओ मेडल Sorry. तो इसके बाद है ना? इसके पहले किए ना उसको ऊपर अपन. ओके, बस अभी मैं यहाँ पे रुका था. अभी वोट ऑफ थैंक्स. हाँ, अभी आप ले लो. वोट ऑफ थैंक्स. अभी हाथ में पकड़ो. No, no. मैं हाथ दिला. Ladies and gentlemen, we aren't going to give the prize to the winners as yet. They need to have some patience, because unless you do the vote of thanks, no program is complete. But if you give the prize, there is nobody to listen to the vote of thanks. So we rather do the vote of thanks. We thank the president of the Garware Clubhouse on behalf of the advisory committee, the vice president, the treasurer, and the complete set of the board of directors who stood like a backbone to us to conduct this tournament with all the conditions that we put across to them. And we look forward to their support in the years to come to make this one of the most prestigious tournaments for Garware Club in years to come. To our owners, we owe you a lot. Without you, there would never have been this tournament. And then the guys who contributed, our sponsors. Brilliantly done by each of them. They've gone whole hog to support Garware Clubhouse and this tournament, and they need a bigger round of applause, gentlemen. To the match officials, the umpires, the scorers, Mr. Bista, who acted as match referee. Commendable job under high pressure situations. A small round of applause for them too, sir. I see no applause coming in from the all season foods for the match officials. But that also will be taken care of, and assure you. To all
all seasons food, Kiran Bhai and Ladu Samrat, for the excellent hospitality that you catered right through this tournament for us. The Mumbai Cricket Association, which stood like a rock with us to conduct this tournament. The Minister for Railways, Mr. Rangaswamy of Western Railway Sports Association, for all their support. They're one of the finest grounds that we played this tournament uninterrupted. And finally, despite all the fights that we had, I must thank my event managers, Manish and his team, Kavita and his team, for going through with the tournament. No, thank you. Gali de raha hu. With the excellent coordination right through this tournament. Guys, this ground we have got through the Ministry of Railway, through the Mr. Raj Purohit ji, and I think so we would have not got the ground like this, but because of his effort we cannot say anything about it. But thank you very much, sir, for your this thing. Sapiens, please wait for a second. We give special thanks to Virat for sponsoring elegant apparels and giving special gift hampers to man of the match for all the matches. And I request Mr. Dinesh Patel to collect on behalf of Balasinor Tigers. Mr. Dinesh Patel is there? Okay. Mohit, can you? Sachin Bhai. So, man of the match players were Dinesh Patel from Balasinor Tigers, Arish Mansoori and Amit Dasani. Arish Mansoori and Amit Dasani. तीनों दे दे तीनों तीनों साथ में. मंगेश तीनों क्यों? I would request Mr. Samisha to come and please collect man of the match awards for Mr. Harshal Shah, Kavish Javeri. Kavish, if you are here, please come and collect yourself. From Virat, Mr. Bakul Mistry is going to come and give this awards. So I request from Marco Polo to collect on behalf of Mr. Nihar Shah and Aryan Babar Desai. Mr. Bakul Mistry will give away the awards. From Triumph Knights, I would request Mr. Akshay to come forward and collect on behalf of Mr. Vinod Raghavan and Mr. Brijeshwet. Bakul Bhai, please, if you can give away the awards. From Sapient Leopards, I would request Mr. Rachit Bakshi to please come and also Prithvi Kothari to come over. Dhrumin, if you can come please. So this award is for man of the match, Mr. Prithvi Kothari and Dhrumin Shah. Mr. Bakul Mistry will give this award. From Mumbai Stars Cheetahs, I would request Mr. Sohail Shah to come and collect on behalf of yourself and Shanil Shah, please.
Mr. Bakul Mistry will give this award. And now the most awaited award and the cup. I request captain of all seasons team, Mr. Samir Shah, to come on the dais and along with his team members and accept the trophy and prize money of rupees 1 lakh for winner of first season of Billmart GCH Cricket Super League 2022. Come, everybody come. Make some noise, guys. Come on, guys. किशोर मेडल कैप्टन को दो कैप्टन ने आप ही दे Samir, please collect medals on behalf of your team. Thank you all the Thank you, Chief. We'll meet you for second edition. We thank you everyone, and now let's hope and meet in the second edition. I request all to proceed for the lunch. Please don't leave. Have lunch and then leave, please. Sapient, creating happy investors.